हेलो 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 गुड आफ्टरनून सभी को जय गुरु। आज हम लोग सत्संग फॉर भुवनेश्वर की तरफ से एक म्यूजिक ग्रुप आप सभी के सामने कुछ सॉन्ग्स लेके आए। एंड पहला जो सॉन्ग है ये है मंत्र के ऊपर, मतलब नाम के ऊपर। आप कोई भी भगवान को मानिए, श्री राम को मानिए, कृष्ण जी को मानिए, हम ठाकुर जी को मानते हैं तो उनका एक नाम है, वो नाम को हमेशा हमको जप करना चाहिए, ठीक है। कोई मुस्लिम है उनका अपना नाम होता है, क्रिश्चियन उनका नाम होता है, लेकिन हमेशा जपना चाहिए। तो ये सॉन्ग उसी के ऊपर। नाम तुम्हारा मैं बताऊं, हर पल दिलवारा। नाम तुम्हारा मैं बताऊं, हर पल दिलवारा। नाम तुम्हारा मैं बताऊं,
Now we have another beautiful. Hello, hello. So presenting before you Abhilash Devta and Dipta Sundar Mahanti. हेलो चेक चेक हेलो चेक। तो ये जो अगला गाना है ये जनरली हमारे जो यूथ जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहता है लाइफ में, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन ड्रीम्स के बीच हमको बहुत सारे डेविएशंस आते हैं, कहीं खो ना जाए, अलग रास्ते में चले ना जाए। इसलिए ये ठाकुर जी का एक प्यारा सा गाना है, हमारी जो उम्मीद है उसको आप सहारा दो, ये हम उनको प्रे कर रहे हैं, ठीक है। ये गाना बहुत अच्छा लगा आप सभी को, थोड़ा बॉलीवुड टाइप का भी आप लोग वाइब करेंगे इसमें, ठीक है। चल रहा हूँ न जाने खुद से दूर क्यों, अनजानी राहों में हुआ लापता। कश्ती मेरी डगमगाती लहरों में खो गई थी, होकर बेखबर गुमशुदा। उम्मीदों को दो किनारा सभी को, दो सहारा इतनी सी है मेरी तश्नगी। तुझ में ही तो समाया सब है, साथ दो तो क्या फिक्र है, रोएगी ना कभी ये जिंदगी। फिर कभी कभी सपने मेरे टूटे बिखरे सारे जो बेजुबां में उनको ढूंढता। काले बादल घेरे आसमां को क्यों सोचता मैं, क्या है ये मेरा इम्तिहान। सिंग। उम्मीदों को दो किनारा सभी को, दो सहारा इतनी सी है मेरी तश्नगी। तुझ में ही तो समाया सब है, साथ दो तो क्या फिक्र है, रोएगी ना कभी ये जिंदगी। फिर कभी चल रहा हूँ न जाने खुद से दूर क्यों, अनजानी राहों में हुआ लापता। कश्ती मेरी डगमगाती लहरों में खो गई थी, होकर बेखबर गुमशुदा। उम्मीदों को दो किनारा सभी को, दो सहारा इतनी सी है मेरी तश्नगी। तुझ में ही तो समाया सब है, साथ दो तो क्या फिक्र है, रोएगी ना कभी ये जिंदगी। फिर कभी फिर कभी
थैंक यू सो मच. हेलो हेलो. एक ही गाना. So this is going to be the last song. होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार. अरे मनवा रे होगा तेरा बेड़ा पार. अरे आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के. कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार. अरे आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के. कर ले तो कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार. देख उनको तू भर के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सवरिया. देख उनको तो भर के नजरिया, पावन कर ले तो मन को सवरिया. सावरिया सावरिया नजरिया नजरिया, सावरिया सावरिया नजरिया नजरिया, सावरिया सावरिया नजरिया नजरिया. सावरिया सावरिया नजरिया नजरिया. अरे प्रभु की महिमा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार. सारा जगत के वो पालनहार, दुखियन के वो सुनत पुकार. सारा जगत के वो पालनहार, दुखियन के वो सुनत पुकार. वो पालनहार पालनहार सुनत पुकार सुनत पुकार. वो पालनहार पालनहार सुनत पुकार सुनत पुकार. अरे पालनहार पालनहार सुनत पुकार सुनत पुकार. ओ पालनहार पालनहार सुनत पुकार सुनत पुकार. करो विनती
विनती बारंबार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जावे उनके शरण मां। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जावे उनके शरण मां। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जावे उनके शरण मां। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जावे उनके शरण मां। गुजरिया गुजरिया शरण मां 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 शरण मां। गुजरिया 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 गुजरिया शरण मां शरण मां। गुजरिया गुजरिया शरण मां शरण मां। गुजरिया शरण मां। गुजरिया शरण मां। कर देते हैं उधार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के। आसन सजाई के उनको बिठाई के। कर ले तू कोटि जुहार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। थैंक यू जय गुरु जय गुरु। What an electrifying performance. I'm sure everyone over here is still vibing, right? Can we hear it a bit louder for the performer? Okay, so now we will move to the domain-specific plenary sessions where you can explore various career paths in depth. Each session is designed to provide expert guidance in specific domains. These sessions will cover civil and defense services, research and academia, corporate and business, agricultural technology. Choose your domain wisely and make the most of this opportunity. Alongside, we will also have one-to-one career counseling sessions with experts. I encourage all the students to not to hesitate and to make most of this. Thank you. Moving on to our first session, the Civil and Defense Service plenary session, we are honored to have Dr. Jubilee Purkayastha, Lieutenant Rajkumar Thakur, Mr. Narasingha Jethi, Mr. Pradyumna Mahapatra, Mr. Purushottam Mishra, Engineer Pratyush Kumar Pradhan. Let's invite our moderator and panelists to take their seats on the dais. Please.
one announcement. While listening to the panelists, I request everyone to note the question you have, and our volunteers will collect the questions from you, and the experts will answer them as well after the session. Thank you. Good afternoon. We are going to start our first panel discussion of today. That is regarding defense and civil services. So, please, as I think Alpana said, it should be an interactive session. Please consider this is not that much formal because we are here for a purpose, and our purpose is to answer your queries so that our coming over here may be of some use to all of you. So please feel free, ask the questions, and I am just handing over the mic to my fellow panelists for their self-introduction, a very brief introduction, and also a word of motivation from them, and so that we can just start the interactive session immediately. Handing over the mic to sir. Jai Guru. Good afternoon to all of you, all the respected guests, dignitaries, and my all the guests in the plenary session. I am Narsingha Jethi, working as Deputy Director General in Doordarshan, Odisha, Bhubaneswar, and for the entire Odisha zone, I am responsible for the working of all Doordarshan Kendras all over Odisha, and being a responsible human being, our aim is to serve the nation and to do some good for the public, to disseminate the news and all entertainment programs to the public. And for this particular session, actually there is a, actually I will give thanks to the SATSANG Bhubaneswar, and under the guidance of our beloved Param Pujapad Sri Sri Acharya and Puja Sri Sri Abinda. Now this career counseling session was done here, and I feel very proud to be a part of this session, and our aim is to guide the students, the dear students who are sitting here. They have come from diverse fields, engineering, management, and science, general science, and all different topics. Different subjects are there, but our aim is to guide them how to choose their career. So being an engineer, I have to guide how to select through the UPSC examination, how to have a journey as a class 1 officer in central government organization, and that is conducted by UPSC, that Indian Engineering Services Examination. For that purpose, I am here to guide, and we will have some interaction section, and any doubts anybody is having, I am there. Actually, basically I am having electronics and electrical engineering backgrounds. I can guide to 2 groups of students, those who are in the electrical science, electrical engineering, and electronics and communication engineering, and computer science engineering, those who are interested for central government job through UPSC. Thank you. Joy Guru to all.
यहाँ पर उपस्थित ठाकुर जी के सारे जो पांजाधारी सत्संगी और यहाँ पैनल पर उपस्थित जो गुरु भाई और माँ और यहाँ पर उपस्थित सारे स्टूडेंट्स, सभी को मेरा जय गुरु। I am Pradyumna Kumar Mahapatra, now working as a General Manager, BSNL Baleswar Telecom District. Basically, I am from actually electronics and telecom discipline. जो भी ठाकुर जी को लेकर के जो हम आज जो स्थिति में पहुँचे हैं, जो मेरा अनुभव है कि अगर कोई आइडियल सामने हो तो लाइफ एक सामग्रिक भाव से जो चाहिए, जो आदमी को जो चाहिए, सुख शांति और आनंद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ठाकुर जी को लेके माथे पे लेके आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम फील्ड में जो भी क्वेश्चंस पर्टिकुलरली स्टूडेंट लोग जो भी है, जो इनका अभी कैरियर का शुरुआत है, कैसे आगे जाना है, किस फील्ड में जाए, ये एक्चुअली लॉट ऑफ confusion may be there. So actually we are here to make you actually aware about the, or you will give some guidance how to proceed further. So ultimately वही हम बोलेंगे कि एक तो जो कैरियर का बात है वो तो डेफिनेटली सबको आगे कैसे अच्छे से कैरियर बनाना है, और उसके साथ साथ मेरा ये बोलना है कि एक आइडियल भी सामने होना चाहिए जिसको लेकर के हम अच्छी तरह से अपना जीवन को सफल करेंगे। इसी के साथ हम ये यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। हेलो, सत्संग बिहार भुवनेश्वर हमको ये जो मंच दिए हैं, आपके साथ हम इंटरेक्शन कर सकें, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और प्यार दोनों में आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर प्रत्युष कुमार प्रधान है। मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में। मैं ओडिशा इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करके यहाँ पे आया हूँ। और एक बात है, मैं यूपीएससी भी प्रिपेयर कर रहा था। कुछ गलत डिसीजन, ठीक मैंने गाइडेंस के लैक ऑफ गाइडेंस में क्रैक कर नहीं पाया, तो इसीलिए मैं 2-3 पॉइंट बोल के मेरा बात ख़त्म करूँगा कि ये जो आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, जहाँ पर एक एड आता है रोहित शर्मा का, जब वो क्या बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसका एक जो फ्रेंड है वो पूछता है, अरे भाई मार्केट तो ऊपर नीचे हो रहा है, अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, वो निकल जाऊँगा मार्केट से। तभी रोहित शर्मा बोलता है कि अरे तुम क्रिकेट का फ़ैन कब से हुआ हो? ना, मैं 1996 उस समय से हुआ हूँ जब इंडिया सेमीफाइनल हार गया। तो वो पूछ रहा है, तो हार गया अभी क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, वो तो इंडिया है ना, इंडिया हमारा जान है, इसीलिए देख रहा हूँ। एग्जैक्टली हमारा कैरियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ, ये तीनों
एक प्रोसेस है, हम इसको, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें हम जितना डट कर रहेंगे उतना ही हमारा जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। ये लॉन्ग टर्म हमको खेलना पड़ेगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं, ये जो ओपीएससी है और यूपीएससी, ये दोनों एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें हमको डट के रहना है। फिर और एक, इसको डट के रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा रूट जो हमारा बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। चाइना में एक बेम्बो ट्री है जो कि किसान जब सीड डालता है ना, वो पहले साल कुछ नहीं होता है, 2 साल भी कुछ नहीं, 3 साल 4 साल चला जाता है, मगर कुछ भी नहीं होता है। 5 साल में क्या होता है, एक 6 वीक में, माने 6 सप्ताह में ही वो 90 फीट ऊंचा चला जाता है। वो जो 4 साल क्या कर रहा था, 4 साल वो बेस बना रहा था, उसका रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इसलिए वो 6 महीना में, 6 वीक में वो 90 फीट मतलब 8 स्टोर बिल्डिंग बन गया है वो। तो इसीलिए हमारा ओपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी डिफेंस सर्विस भी हो, हमारा बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, इसको समझना होगा। ये जब बेस हो जाएगा उसके बाद हम वो पेड़ की तरह डट कर खड़े रह सकते हैं। और एक बात है, हमको ये जो डिप्रेशन है ना, इसको दूर करना है। इसीलिए हम आइडियल सेंट्रिक जो है, ये हमको नेगेटिव एनवायरनमेंट को नहीं लेता है, पॉजिटिव भाई में लेके हमको सक्सेस के ओर ले जाता है। जय गुरु, थैंक यू। Hello everyone, Jai Guru. I am Purushottam Misra. After clearing Odisha Civil Service exam, I joined as additional Tahsildar, then served as assistant collector, now in sub-register Jadeshwar. So I have guided many students, because apart from it, I was, first of all, I qualified, basically I have completed my BTech in mechanical engineering, then I was TCS, I was a software engineer, served in TCS for long 7 years. Apart from it, I was an educator in an academy, and right now in Study IQ as well. So I have guided many students. Many of my students are serving in cleared exams like supply inspector, sub-inspector, assistant section officer, and many students are also cleared Odisha Civil Service exam. So if you have any doubts, then I am happy to serve you, to guide you in the most simple manner that I can say, because during this preparation you might be going through many stress, tension, frustrations, all will come. So I will give you 2 suggestions. So if you are starting your preparation, then just be focused and set your mind that this is my last chance and I have to give my 100%. I don't have any other opportunity. After giving this exam, then you think that this mere exam cannot decide my future. I have n number of things, so that failure won't touch you. Thank you. हेलो, जय हिंद वन, जय हिंद एवरीवन। आवाज कहाँ पे है? ज़्यादा खाना हो गया है क्या? थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। जय हिंद एवरीवन। Very nice. So my brief introduction is कि I am Lieutenant Rajkumar Thakur. I have cleared UPSC CDS examination and UPSC CAPF Assistant Commandant examination. Presently I am serving as Assistant Commandant, that is equivalent rank of Assistant Commissioner of Police and DSP. And in my previous, if I talk about my education, then I have also cleared UPSC IIT JEE advanced examination 2 times, and IIT Guwahati B ARC dropout, and then I have done my BTech in Computer Science and Engineering from NIT Jalandhar. And after that only I cleared UPSC CDS and served Indian Navy as Marine Commando. That is the highest quality of commandos which our country have. So after serving the nation 3.5 years, then I quit. Then again I cleared SSC CGL and SSC so many examination, 3 examination SSCs. And after that I cleared UPSC CAP Assistant Commandant examination. And here I am today with you. मेरे को भाई, बंधु, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझ के, जो भी क्लियर माइंड में लेके आए हो, anything you can ask, I'll be very happy to answer your question. Thank you. Thank you, Raja. सबू पार्टिसिपेंट मानक रिक्वेस्ट, जिते भी स्टूडेंट अच्छा, दिस इज नॉट अबाउट इंग्लिश, दिस इज नॉट अबाउट हिंदी, ओडिया रे भी पचारि पारिबो,
पैनलिस्ट बहुत लोग ओडिया भी अच्छा भावनी जे इंग्लीश रे खाली पचारे गले पचारि आउ यहाँ बहुत प्रॉब्लम मु देखी जे ओडिया भाविकी आम कही पारुने ओडिया रे भी पचार समस्त आंसर देवे। थैंक यू। थैंक यू। सी जैसे उन्होंने बताया लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर। आपको जो लैंग्वेज आती है आप बताइए, जो कोई भी लैंग्वेज से, बस कन्वेइंग द मैसेज एंड गेटिंग द आंसर। यहाँ पे कोई बाइंडिंग्स नहीं है कोई लैंग्वेज का, ठीक है, आराम से आप लोग पूछिए। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि बिकॉज इट इज़ लाइक डिफेंस एंड सिविल, लेट अस फर्स्ट गो फॉर द डिफेंस। ओके, सो हु आर द स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग फॉर एंटर इनटू डिफेंस सेक्टर? हाथ उठाइए थोड़ा। ओनली वन? और कोई डिफेंस में जाना नहीं चाहता? या 2 मोर 3? हेजिटेशन क्यों हो रही है? 4? फटाफट उठाइए। आप लीडर बनने के लिए आए हो, हाथ उठाओ। कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। लाइफ में लीडर बनना है, अधिकारी ऐसे नहीं होता है, कॉन्फिडेंस के साथ बनते हैं। हाथ उठाओ। देखो आज हाथ नहीं उठाओगे तो कभी नहीं उठा पाओगे आगे। कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये एक फोरम है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रही है। हाथ ऐसे नहीं, प्रॉपर कोई भी काम विथ ऑल डेडिकेशन, राइट, प्रॉपर तरीके से आप हाथ उठाइए, ठीक है। और हाथ टेढ़ा क्यों हो रही है, ऐसे ऐसे क्यों हो रही है? यस, सीधा। यंग बच्चे हो, पूरा जोर है हाथ में, उठाओ प्रॉपर, डन, ठीक है। आप पूछिए 1 by 1 क्वेश्चंस। अगर कॉमन क्वेश्चंस है तो हम आंसर दे करेंगे, अगर किसी का डिफरेंट क्वेश्चंस है तो अलग अलग से आंसर करेंगे। बताइए, आप बताइए, पहले आपसे शुरू करते हैं। हाँ, या टेल मी। माइक दे दो, यहाँ से आता ही आइए, इस साइड में ये है, पहले स्टूडेंट ये है। आराम से पूछिए आप, कोई भी लेमन टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A very good afternoon, sir and madam. My first question is, what I will do, that is higher study or I will go in defense. I mean, graduation रे NCC रे join करी मोर इंटरेस्ट आसला डिफेंस रे, बट मु सेतिबाई मु मोर इकोनॉमिक्स मोर चलथिला ग्रेजुएशन, तो मु ताकू सिलेबस ठीक से कवर करि पारिनी। बट तापरे मु मोर फैमिली मेंबर्स रो प्रेशर रे मु MA करली इकोनॉमिक्स रे, तो एबे मोर इकोनॉमिक्स कंप्लीट होबा पई जाउची, किंतु डिफेंस अबाउट रे भी मु ठीक से पढ़ी पारलिनी कि ना इकोनॉमिक्स रे भी मु ठीक से सिलेबस कंप्लीट करि पारलिनी। तो एबे मो पाखरे 2 years टाइम अछि, ड्यू टू सम रीजन माय फैमिली सिचुएशन। तो व्हाट आई विल डू, मु हायर स्टडी करिबी या फिर मोर 2 month रे मोर MA कंप्लीट हे जिवो। तो मु कोन करले को जॉब तो फर्स्ट सिक्योर करी। तमें से जिनसटा आउ थे टिके को ब्रीफली को, ताकि मु हेडा कन्वे कर देबे। आउ थे मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। सो आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, क्लियर है, सो डोंट वरी, मुझे समझ में आ गया। सो आप चाह रहे हैं कि आपने इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, बट यू ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन डिफेंस सर्विसेज। सो द थिंग इज़ कि आपके माइंड में सबसे पहला चीज़ ये क्लियर होना चाहिए, आप 5 साल बाद खुद को कहाँ पे देखते हैं। इट इज़ नॉट कि योर फैमिली, इट इज़ ऑल अबाउट यू, क्योंकि 5 साल बाद आपको वो लाइफ जीना है, आप कैसे खुद को देख रहे हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू ओनली। सो अगर आपको ये चीज़ करना है कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है और कौन सा फील्ड चूज़ नहीं करना है, आप आपका पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये जो डिफेंस का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको क्लियरिटी के साथ जाना पड़ेगा। बेसिक कुछ क्वेश्चंस है, बेसिक कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आपका कंटिन्यू अपना जो पढ़ाई है आप कर सकते हैं। अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, बट उसके साथ साथ मेरा इंजीनियरिंग जो था उसके साथ साथ मैंने मेरा जो गोल है UPSC
उसके लिए मैं लगा रहा, मतलब मेरा पढ़ाई भी खराब नहीं हुआ और मेरा जो गोल था उसको मैं कंटिन्यू करता गया। तो आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर वो चीज़ क्लियर होगा कि आपको वो वर्दी चाहिए या फिर वो पोजीशन चाहिए, तो आपको उसके लिए एक टाइम आपको देना पड़ेगा। बट इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि एकदम एक पाथ को एकदम छोड़ दो और दूसरा पाथ एकदम अपना लो, जरूरी नहीं है। आप दोनों भी एक साथ में कर सकते हैं, बट आपका क्लियरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, बस इतना ही। और एनसीसी आपने अगर किया है तो ऑलरेडी यू आर इन ए गुड पाथ, सो डोंट वरी अबाउट इट। और माइंड को हमेशा मतलब वॉरियर माइंडसेट के साथ खुद को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। आई थिंक आई हैव गिवन योर आंसर। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सर मत गोटे ही पाथ चूज कर बिकज मो पाखे बेसी टाइम ना जेहेतु, तो आई थिंक कि मत ए 2 मंथ पर मत पार्ट टाइम किसी कर विथ मत गोटे ही पाथ चूज कर। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले मतलब कोई एक जो रास्ता आपको चूज करना है आप उसको चूज कर लीजिए। मैं ये सजेशन दूंगा, आप एक रास्ता चूज कर लीजिए, उस पर आप कंटिन्यू कीजिए। आपको कोई करियर अगर प्रोसीड करना है उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप अगर आप दिमाग में रखते हैं कि आपको डिफेंस में जाना है तो उसके साथ साथ साइड बाय साइड वो आपका पर्सनल चीज़ होगा, ठीक है। उसको फैमिली को भी नहीं पता होगा या फिर किसी को भी नहीं पता होगा, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबसे पहले एक रास्ता आप चूज कर लीजिए। आपको इकोनॉमिक्स में अगर आगे जाना है तो आप उसको चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको साथ साथ जगह मतलब बात यह है ना कि आपका जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा सेक्रीफाइस होगा, तो आपको टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। अगर आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर मु एवरेज स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मु फर्स्ट बैक बेंचर्स थी, तापर रिसेंटली 5-3 इयर्स एवरेज ठीक ठाक अच्छी। तो मु स्लो लर्नर जेहेतु तो मत सब जिनसा कवर करने बहुत टाइम लगे, तो एटा बेसी टाइम लेंदी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम टॉपर बनना जरूरी है। मैं हमेशा से ही बैक बेंचर रहा हूँ और मेरा बीटेक तक मैं बैक बेंचर ही रहा हूँ। मेरा 6.8 CGPA से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का अगर हम नंबर पूछेंगे तो मेरा कितना था, 4 CGPA था बस मेरा। अब बताओ, तो ये जरूरी नहीं है कि आप कब कहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा जब जरूरत है आपको उस समय फुल देना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो है आपको देना पड़ेगा, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेन यू आर इन ए डेथ बेड तब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने ये चीज़ सोचा था मैंने कर नहीं पाया। तो आपको जो है आज ही है और अभी है, कल भी नहीं है और परसों भी नहीं होगा, तो आज ही है, आज को आपको सही से ढंग से जीना है, ठीक है। आई थिंक आई हैव गिवन योर आंसर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके लिए और एक बात बताना चाहूँगी, आप जो परसू कर रहे हो अपना इकोनॉमिक्स का, यू शुड हैव द बेसिक एजुकेशन, वो तो चाहिए ही डिग्री। ये पैरेलल इन्होंने जैसे बताए आपको ऐसे करना है, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने से आपका बेसिक एजुकेशन नीचे आ गई, यू आर नॉट एलिजिबल इवन टू अप्लाई। उसको कंटिन्यू तो जरूर करनी है साथ साथ, लेकिन देखो ह्यूमन एफर्ट का, ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन एनर्जी का कोई लिमिट नहीं है, जैसे सब लोगों ने बताया। तो अगर आप कोशिश करोगे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एक टाइम डिवाइड करो, इतना आवर्स आई विल बी डिवोटिंग फॉर माई दिस कोर्स, इतना आवर्स फॉर दिस, तो आप कर सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम निवेदिता बारिक। जो डिफेंस में प्रिपरेशन करना होता है उसमें क्या सबसे बड़ी गलती होती है जो हम लोग उसको अवॉइड करना चाहिए, और फिज़िकल में और रिटन एग्ज़ाम के लिए, और मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, उसमें कितना टाइम मैनेज करूँ और कैसे टाइम मैनेज करूँ, ये जानना था। डिफेंस में बेसिकली आप किस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में या पुलिस में, ऐसा कुछ? पुलिस में। पुलिस में। सो आपको अभी टाइम कैसे मैनेज करना है, उसके साथ साथ आप कैसे उसको आगे बढ़ सकते हैं। और क्या बेसिक मिस्टेक होती है उसको अवॉइड करना। ओके, सो मैं 4-5 एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ गवर्नमेंट का, जिसमें इंक्लूडेड 2 UPSC एग्ज़ाम्स हैं,
और मैं यूपीएससी सिविल सर्विस में इस बार मैंने इंटरव्यू तक गया था, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। बट ये जो मेरा लंबा टाइम है, इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका प्रिपरेशन में एक चीज़ सबसे बड़ा जो हथियार है वो है PYQ, जैसे कि सर ने बताया, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। और दूसरा चीज़ है सिलेबस, उसको एकदम घोल के पी लो, ठीक है। ये यूजुअली नहीं करते हैं बच्चे, डायरेक्टली कोचिंग या फिर किसी भी तरीके से बुक से पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि आप किसी लड़ाई में मैदान में जा रहे हैं, आपको लड़ाई के टेरेन के बारे में नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा किस साइड से अटैक करेगा, है ना। तो आपको सबसे पहले रास्ता पहले क्लियर करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे मुझे उसको आंसर करना है, टैकल करना है। तो पहला चीज़ तो ये है कि ये लोग गलती करते हैं, आप सिलेबस में स्टिक कीजिए और उसके साथ साथ PYQ में स्टिक कीजिए। और जबकि आपने बताया कि पुलिस में आपको जाना है, सो आपको फिजिकली भी फिट उतना ही ज़रूरी है। तो फिजिकल के लिए आपको माइंड के साथ एवरीडे आपको लड़ना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ आपको एवरीडे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा कि आपको मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आलस इंसान हूँ, मैं अगर मेरा बात बताऊँ, लेकिन एवरीडे आई रन 10 किलोमीटर, वो चाहे शीत हो, ठंडा हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ डेज कुछ भी हो, मैं जैसे कि सुबह उठ के लोग ब्रश करते हैं, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं रनिंग के लिए जाऊँगा, और मुझे मन नहीं करता है बट मैं लड़ के जाता हूँ। तो आपको लड़ने का एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा, ये यूजुअली नहीं करते हैं। आपके अंदर वो मोटिवेशन से कुछ काम नहीं होगा। आज यहाँ से अगर मोटिवेशन लेके जाएंगे तो कल आपका वो खत्म हो जाएगा। यू हैव टू डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई थिंक आई हैव गिवन योर आंसर, थैंक यू। इन एडिशन टू दैट मैं आपको जो बताना चाहूँगी, देखिए दिस फिजिकल फिटनेस इज़ फॉर एवरीवन। आप यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हो, नॉट ओनली फॉर डिफेंस, की डिफेंस में जाएगा तभी वो फिजिकली फिट रहेगा। फिट इंडिया देयर इज़ ए मूवमेंट। मैं तो डिफेंस में वो राजा जैसे रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, आई एम ए साइंटिस्ट, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्शियस। मैं आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग को मैं ज़रूर अपना पार्क में कम से कम 1 घंटा तो मैं दौड़ लगाती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि अपना फिजिकली फिट रहना है, तो भी आप साथ में मेंटल फिटनेस, देन ओनली यू कैन डू योर एवरीथिंग, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस बताइए आप लोग। Hello everyone, my name is myself Khamangi Das. I want to be an IAS officer, and my first question is for my IAS journey, which stream I choose. And one request, I am not good at English very well. I am not good at English. So जो भी मैं आंसर जानना चाहती हूँ वो मैं हिंदी में या ओडिया में, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है वो बोल सकते हैं। या फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपनकर ग्रेजुएशन कोथरे करूछंती? ग्रेजुएशन करनी दिस मो फर्स्ट ईयर +2 फर्स्ट ईयर, जस्ट आई एम 10th पास आउट। ओके, देन दिस इज अ वेरी गुड टाइम। सो आपनकर वर्तमान बहुत समय अच्छी। फास्ट होची जेमती सर कहते बाइबल भाया आपन सिलेबस प्रिंट बाहर करंतु एवं सिलेबस 1 by 1 माने प्रत्येक वार्ड एवं सेही कॉन्टेक्स्ट रे कौन कौन क्वेश्चंस आसुची एवं कौन कौन कॉन्टेक्स्ट आसी पारे, माने कहबार कथा होची से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दियंतु। ए वार्ड रो माने कोन आ एथरे केमिति क्वेश्चंस आसी पारे, प्रीलिम्स रे कोन क्वेश्चंस आसी पारे, मेंस रे कोन क्वेश्चंस आसी पारे। सो यही क्वेश्चंसटा को जानिया पे तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखियो पड़िबो। तो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ए दीटा जाक जिंस रखिबो, सिलेबस रो पोस्टमार्टम एनालिसिस करिवो को पड़िबो पूरा टोटल बिट बाय बिट, एंड तापरे तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिबो। तमे एही दीटा जिंस केवल मते जेतळे भी आचार्य देव हंतु बा हमर अविंदा भी जेतळे मते पठांती पिलांग मु सेही दीटा जिंस कहे फॉर 6 मंथ्स एटा रिगोरसली प्रैक्टिस खाली करो, खाली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेति कि तमे देखो 6 मंथ्स खाली, देन यू विल गेट ए आइडिया दैट व्हाट यू हैव टू रीड एंड व्हाट यू शुड इग्नोर। ओके, सो सेही प्रैक्टिसटा तमे करो। बाकी तुमर जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अछि हमर ऑप्शनल भी नबाक पड़े, तो तुमर जहाँ भी पढ़ुथबो सेही थ्रू तमे तुमर ऑप्शनल को तमे चूज करिकिनी तापरे तुमर स्पेसिफिक प्रिपरेशन समय स्टार्ट करिवो। सो एबे पई तमे केवल बेसिक्स सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तापर बेसिक्स पढ़िवो, जोटा क्लास 10 तमे कहलो सेही आमेर सिविल सर्विस प्रिपरेशन स्टार्ट कलिबे। आमे भी क्लास 6 रे पढ़ू, जेतबेले गोटे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर करिवो स्टार्ट करिवो आज का डेट रु, सी एनसीईआरटी क्लास 6 रु पुणी जीवो, सी 6 रु पुणी क्लास 10th 12th जाई से पढ़िवो, पुणी तापर पैरेलल जाओ। सो तमे यदि एबे 10th पास करछ देन इट्स अ वेरी गुड टाइम, से कहली। सो तुम पाखे बहुत समय अच्छी, तुम पूरा कंसिस्टेंटली फोकस्ड होकर पूरा पढ़, सो दैट तुम जिते शीघ्र, बिकज हियर चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्शन इज मच मोर हायर देन चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन, बिकज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देबे, तांको भितर मात्र 100 जन मात्र किछि का माने सिंगल डिजिट पिला से माने पाइबे तुम सिविल सर्विस बा तुम जो डेडिकेटेड कैडर जोटा चाहूच
बुझिपार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है सेमती पुलिस सर्विस अच्छी सो एन नंबर ऑफ फील्ड सब अच्छी सो तुम से स्पेसिफिक कैडर तुम पहुँची पार सो एबे तुम प्रिपेरेसन कर एंड विशिंग माय बेस्ट विशेस टू यू. Sir, my question is that for my journey, which stream I choose, science or arts? If you are very much confident and sure about your civil service preparation, ताले तुम्हें arts choose करी परियो, ठीक अच्छी? Because ultimately you have to go through सही तुमको geography, history, economics, polity, environment, ecology, science and technology, current affairs एगुड़ा पढ़ीबार अच्छी, जोड़ा कि तमरो सही जो geography, history, economics का थाकली सर तमरो arts रे easy हबो. So जदि तुम्हें mentally ready ही चो, जदि तमरो goal fix अच्छी, then obviously you have to choose arts. बाकी सेमिति किसी नहीं माने योर बैकग्राउंड इज नॉट ए कॉन्स्टेंट मु निजे भी साइंस स्टूडेंट एंड मु निजे भी मैकेनिकल इंजीनियर एंड मु निजे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रैक्टिस करछि फॉर 7 years. सो योर एजुकेशन शुड नॉट बी ए बैरियर टू क्रैक योर ड्रीम. Sir, my second question is what is the proper strategy to follow UPSC journey? Which strategy I follow? Already said से जहाँ भी कहली से सिलेबस प्रीवियस क्वेश्चंस देन बेसिक्स रू स्टार्ट हबो. सेटा करिले तुमको आइडिया मिली जिवो. तो दिस इज ए माने गोटा में होलिस्टिक आइडिया देलु देन तुम जेतले पढ़िबो तुम सेतले पैरेलली डाउट्स आसीबो एंड इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स. Sir, my third question is, before the graduation, which book I read for UPSC? मतलब मैं अभी से कौन सा बुक पढूं पढ़ना स्टार्ट करूं UPSC के लिए? ओके NCERT पैरेलली तमरो न्यूज़पेपर तमरो जो भी न्यूज़पेपर तुम भल लागुची वेदर इट मे बी इंग्लिश और ओडिया एंड ता सहित डेली न्यूज एनालिसिस जोटा जमती इंपोर्टेंट ए वार चली सो वार एनालिसिस कर व्हाई दिस वार इज गोइंग ऑन सो व्हाट्स द बोन ऑफ इंटेंशन ठीक अच्छे सो यही को ताकू फोकस कर एंड सब कॉन्सेप्ट को बुझिया को ट्राई कर. सर जब मैं देखती हूँ कि मैं यूट्यूब को फॉलो करती हूँ ज़्यादा यूपीएससी के लिए, जब मैं यूट्यूब से देखती हूँ कि कौन सा एनसीईआरटी मतलब अच्छा है पढ़ने के लिए, कौन सा पढ़ने से इजी हो जाएगा यूपीएससी क्रैक करने के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. क्योंकि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री के लिए जो एमएस लक्ष्मीकांत जी का है उनका पढ़ने का कोई प्रिफर करता है, कोई अलग मतलब. यू स्टार्ट योर जर्नी. लक्ष्मीकांत इज फॉर पॉलिटी. ओके मेडिवल हिस्ट्री दैट इज डिफरेंस. सो मेडिवल हिस्ट्री लक्ष्मीकांत नुहति पॉलिटी लक्ष्मीकांत मुझे कह तुम प्रिपेरेसन स्टार्ट कले इट विल बी इजी. केवल बेसिक्स एबे एनसीईआरटी ओनली. ओके एंड स्पेसिफिक बुक्स अच्छी जमीक पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छी, आरएस शर्मा अच्छी हिस्ट्री ना तुम सतीश वर्मा अच्छी, तमती आमर इकोनॉमिक्स रमेश सिंह अच्छी. सो लाइक दिस यू विल गेट बट तुम्हें आग गोटे गोटे बुक्स को एनसीईआरटी को तुम्हें केवल स्टिक कर. सर अभी मैं जो दिशा पब्लिकेशन की जो 6 से 12 तक की जो समर कोर्स है जो बुक है ना वो मैं भी पढ़ना शुरू किया हूँ. थैंक यू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1-to-1 डिस्कशन आउटसाइड. ओके दैट आल्सो कैन ऑल योर आंसर आल्सो विल बी क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. एनीबॉडी फ्रॉम IES interested for IES, Indian Engineering Service? Okay. Some more questions? Only we have another 5 to 7 minutes I can afford. Tell me. Yeah. Brief question, immediately we will be answering. Give him the mic. Pranam sirs, pranam to all sirs. Sir, mo background है ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. एटा मो 3rd year चलछि. तो आई वांट टू गेट दबा को इंटरेस्ट अच्छी बट घर प्रेशर अच्छी जे माने जो कैंपस पाई कि कौन सी जॉब रे लग एंड तू प्रूव बढ़ियो. तो डिफेन्स लाइन में जीवा को हेले आई थिंक माने प्रॉपर रोड मैप दरकार. तो गाइडेंस भी सही वाला दरकार. तो हाउ टू फॉलो द प्रॉपर रोड मैप फॉर ए पायलट इन द सोल्जर्स. सो यू वांट टू जॉइन डिफेंस राइट? यस सर. सो अभी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. yes. आपका एज कितना हुआ? 20. सो अगर आपका मतलब ये जो मैं बता देता हूँ डिफेंस में जाने का जो एंट्रीज है, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस एंट्री हो गया, उसके बाद हो गया एसएससी टेक एंट्री हो गया, एसएससी उसके बाद टीजीसी एंट्री हो गया, डायरेक्ट एंट्री वगैरह, एनसीसी एंट्री हो गया. ये सब चीज़ में इंजीनियर्स ही जाते हैं. एसएससी टेक हो गया, टीजीसी एंट्री हो गया, इसमें बस इंजीनियर ही जाते हैं.
जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस को फॉलो करने के लिए आप बाकी का जितना भी चीज़ है करियर को आप स्टैग्नेट करके छोड़ दें। आप अपना जो फील्ड है उसमें कंटिन्यू कीजिए। आप अपना जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसमें आप कैंपस प्लेसमेंट अब ले सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट ले करके आप आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। बट आई थिंक इसकी डिफेंस का जो प्रिपरेशन है बेसिकली एक रिटन एग्जाम होता है यूपीएससी सीडीएस का, और उसके साथ साथ आपको एसएसबी का एग्जाम देना पड़ता है। एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इज द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ दिस कंट्री। तो इसको पढ़ के या लिख के नहीं पास किया जा सकता है। इट इज़ योर हैबिट, इट इज़ योर माइंडसेट। आपको वो लाइफ जीना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लोग रिटन क्लियर कर लेते हैं बट डिफेंस के लिए वो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको अभी से उसी तरीके से आपको जीना पड़ेगा। जैसे कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, उसको उसी तरीके से जीना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए और उसके साथ साथ ये जो लाइफ जीने का जो तरीका है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अब बाकी जितना भी क्वेरीज है मेरे से बाहर में एकदम अच्छे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव गिवन योर आंसर। थैंक यू सर। Thank I you. have one question. जदि यूपीएससी देकी आमे माने सोल्जर रे दाई परुचे तो आई थिंक व्हाट इज द रोड मैप फॉर टू जॉइन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स फॉर रॉ? So there are so many ways. You have to be in any defense services or police services or paramilitary forces. This is the one. And another one is ki you have to be from any specific domain. Like if you are from RBI, if you have joined RBI, so economical offense wing करके RNAW में एंट्री होते हैं डेपुटेशन बेसिस पे। तो स्टेट पुलिस से भी जैसे डेपुटेशन में RNAW में जाते हैं, उसके बाद CAPF से भी जाते हैं RNAW में, उसके बाद आर्मी से भी आते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले एक सर्विस में आना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिप्यूट किया जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको डिप्यूट किया जाएगा, आपके अंदर वो सब चीज़ होना पड़ेगा, वो लोग आपको ढूंढ लेंगे। ये चीज जो बोलते हैं ठीक है, रॉ को कोई ढूंढता नहीं, रॉ हाँ, एकदम एकदम। और कोई भी क्वेरी होगा मैं आपको बाहर में यहाँ पे मिलूंगा, आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, Raja. Two more questions. Can we take? One last question. Yeah, please. Be loud and fast. Hello ma'am, I am Shagni, currently studying in 3rd year. Ma'am, just wanted to ask, after actually my 3rd year degree is going to end after 1 month. So ma'am, I just want to pursue masters. So should I pursue masters within the country or outside the country? Which field you want to go for? Ma'am, in AIML field. In the research background, ma'am. Into you in future you want to be in R&D, right? Yes ma'am, yes ma'am. So definitely it all depends. You know, if you are trying for a PhD from India, it's good. You can go for a postdoc outside, because here lots of opportunities are there. DRDO is there, IITs are there, and good universities are there. You can do your PhD over here. And at the same time, if you are really don't go abroad just for the sake of going abroad. If somebody is there who is doing excellent research and you are getting an opportunity in the field of interest, then only you go. Okay? Just for going abroad, don't go. Okay? Ma'am, is there a difference in the opportunities and the amount of opportunities which is present in our country and abroad? Nothing like that. Only thing, your interest in your field of research, that is the ultimately opening door for your whatever you want to do in future. Okay, ma'am. Okay, so your interest in research, your field, and who are the person under whom you will be working, that depends actually. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Please don't worry, our panelists will be available for one-to-one interaction in the designated tables. You can reach them out with your questions. Now I would like to invite Mr. Narsingha Jethi to felicitate our Civil and Defence Service panelists. Anyway, no issue. They will be asking a question outside. Here they are hesitating. Please, you can ask your questions outside. They will be available to answer all of them.
Thank you everyone. All panelists going outside. Whoever is interested, please come outside. For one-to-one interaction, you can go out. Civil and defense. Yes, thank you. I want to say something. Actually, I do not know why actually people are not interested for Indian engineering services, because nowadays actually there is a good opportunity for engineers to be in central government organizations. Like actually there are a lot of prospects are there, and people, so many promotion prospects are there. They will go directly in class 1 rank at level 10 grade, and they can, after every 4 years, they get one promotion. And they can reach to, I think, level 16, up to level 16 they can rise. Every 4 years, one promotion, 4 to 5 years. So that is very good opportunity. But nowadays, actually, I think actually students are not studying their proper core field. Actually, subjects like mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, plenty jobs are there in central government. And every year, some jobs are there, but nobody is interested. I do not know why is it that is a degradation of quality of education in engineering, or what the thing? What I think, definitely people will be interested. Probably awareness is not there. So those who are not able to understand what the IES is, you can just come out, you can again discuss also. Okay. Thank you so much. Moving on to our second plenary session of Higher Education, Academia and Research. We are honored to have Dr. Sutanu Chakravarti as our moderator of this session, Dr. Lingaraj Sahu, Dr. Pradyut Kumar Biswal, Dr. Bibhu Prasad Panda, Ms. Sanchari Kundu, Dr. Abhi Ghosh. हेलो एवरीवन ये गोटे सेशन पर मु देखी सारे जे पिलांगर क्वेश्चन रो इंटरेस्ट अच्छी बट लैंग्वेज बैरियर एबे भी रहूची मु एई सेशन टा पई कहूची एई सेशन रे स्टेज रे केही रहबेनी व्हाट एवर यू वांट टू आस्क अबाउट हायर स्टडीज ओके आम पाखे सीनियर प्रोफेसर्स अच्छी जो मैंने आंसर करेंगे सो जी भी हायर स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन करने को चाहूच एबे तुम क्वेश्चन कर आम ये 1-to-1 डिस्कस करवा कहीं स्टेज को जीवेनी कि तुमको भाविया दरकार नहीं तुम हिंदी रे कहूच कि इंग्लिश रे कहूच आम मैंने पूरा ओडिया बुझीपारु पूरा पूरी ओडिया बुझीपारु ओडिया रे पचार ओडिया रे मु कहबी आउ जो सीनियर प्रोफेसर मैंने बाहर अच्छा मु तांको कहीदेवी से तुम आंसर देवे ओडिया रे पचार जो मानकर सिविल डिफेन्स पाई इंटरेस्ट अच्छी बाहर हायर स्टडी रे इंटरेस्ट नहीं से मैंने सिविल डिफेन्स पाई क्वेश्चन आंसर डिस्कशन बाहर करि परिबे बाहर 1-to-1 डिस्कशन पाई मो प्रद्युत कुमार विश्वाल एसोसिएट प्रोफेसर एट IIIT भुवनेश्वर I am basically from electronics engineering background, so you can ask any questions related to engineering. I can guide you regarding the higher educations, research, all those fields I can guide you. So any type of question. Anyone from engineering background? You can ask your queries here. Many engineering graduates must be here. So okay, we will start one by one question. मोर गोटे क्वेश्चन अच्छी मु डाक्तर हो पारे किंतु रिसर्च विषय रे आमर टिके नॉलेज कम अच्छी सो आर द स्टूडेंट्स इंडियन सिनारियो रे रिसर्च विषय आम मान नॉलेज कम अच्छी से प्रैक्टिकल कथा से इंजीनियर हूँ कि डाक्तर हूँ कि जनरल स्टडीज हो जो थ्री भी हो रिसर्च रे कौन कौन सब पार्ट अच्छी तो रिसर्च जन स्टार्ट कर
कौन पार्ट को से ध्यान देव प्रथम पाठ तो बेसिक्स नॉलेज हबार अच्छी तापर गोटे हूँ राइट अप केमती कर रिसर्च कोटा कोटा करने कथा नुहे कोटा कोटा डूज डोंट्स टी आप नर्सल कही दिंतु ठीक है एटलास्ट सार को पचारे पड़ा मनो सार को सार जो पढ़े बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस रिसर्च रे एनीबॉडी रिसर्च माने समझ पाते बहुत बड़ा किसी जिनस रिसर्च बहुत प्रकार हो पारे सार जमी पचारे कौन हो पारे रिसर्च बहुत प्रकार हो पारे इट कैन स्टार्ट फ्रॉम किंतु प्रथम जहाँ प्रीवियसली जिते सेसन भी होती मु ऑनलाइन सेसन अटेंड करी फास्ट हाफटा फिजिकली एवं आसिली जहाँ भी स्पीकर माने कहीगले यू शुड स्टिक टू योर बेस निजर बेसटा स्ट्रंग हवा दरकार तापर जदि मु कंप्यूटर साइंस अच्छी किंबा अन्य कौन सी डिपार्टमेंट अच्छी मते गोटे प्रथमे गोटे सब्जेक्ट कारण मु कंप्यूटर साइंस रिसर्च कर पारिनी जदि जन कहबा जे आई एम डूइंग रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस ताले सेटा भूल कथा कारण कंप्यूटर साइंस इज भास्ट फील्ड ता भीतर बहुत फील्ड अच्छी तेणु मु जी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो कि इलेक्ट्रोनिक्स स्टूडेंट हो इलेक्ट्रिकल हो मेकानिकल हो मते प्रथमे भाविया पड़ो मोर को विषय स्ट्रंग अच्छी मु को टॉपिक रे स्ट्रंग अच्छी प्रथमे से टॉपिकटा को आग निजको चूज करिया पड़ो सेटा प्रथमे जानी सारा पर जे मोर यही सब्जेक्ट मोर बहुत इंटरेस्ट अच्छी मुझे विषय सब पढ़ी बेसिक फंडामेंटाली मोर क्लीयर अच्छी सेटा प्रथम जिनस तापर मु चेष्टा करी मास्टर्स पाई मास्टर्स हवा हेले मास्टर्स कारण एबे आम ग्रेजुएशन कथा कहूँ ग्रेजुएशन में फंडामेंटाली स्ट्रंग हेली मास्टर्स में मुझे स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को तेणु जो मुझे स्पेशलाइजेशन को जाऊँगी से मुझे स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्ली चूज करी जे मोर जो मु भाभी मुझे विषय में आगू जी मो एकेडमिक कैरियरटा मु गढ़ी रिसर्च फील्ड में बढ़ी बोली तेणु प्रथम से मोर भाविकी से अनुसार स्पेशलाइजेशन नबार अच्छी ठीक अच्छे जड़े भी जब चूज न कर पारा एमती भी हुए सिचुएशन जे मु गोटे पिला अच्छा आप देखिए जमी से कहते जे मु कंप्यूटर साइंस पढ़ी बोली छाड़ी एनआईटी जलंधर जॉइन कले रादर देन स्टडीइंग एट आईआईटी तेणु तांकर इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस सेमती मोर गोटे स्पेशलाइजेशन इंटरेस्ट अच्छी आउ से स्पेशलाइजेशन गोटे पर्टिकुलर जगार अच्छी एमती भी हो पारे मु न पाई पारे से जगार से कौन करवा एटलिस्ट कंप्लीट योर मास्टर्स कारण जो मु पीएचडी करिया जाउची रिसर्च करिया जाउची मोर मास्टर्स कंप्लीट होता दरकार बट विद इन द रिलेटेड फील्ड इट इज नॉट दैट गोटे अन्य फील्ड रे किसी गोटे करी तो आजिकल भी गोटे प्रमोट करा बहुत इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेटा भी गोटे बहुत बड़ जिनस सार जमी कहते मेडिकल साइंस रे आमर बहुत लोग कंप्यूटर साइंस हूँ कि इलेक्ट्रोनिक्स हूँ दो दे डोंट नो अबाउट मेडिकल साइंस इन डीप किंतु से किसी ना कि कम कर कंट्रीब्यूट कर टुवर्ड्स द मेडिकल साइंस से आजिकल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी गोटे बहुत बड़ जिनस तेणु प्रथम निजर गोलटा सेट करा दरकार जे मु कौन रिसर्च करने चाहूँगी तापर गोटे भल जगार मु रिसर्च करी सेटा भी गोटे बड़ जिनस भल जगह कि गोटे भल मो गाइड को चूज करी जमी लाइफ में आमर जड़े गाइड दरकार गोटे टॉपिक उपर मुझे रिसर्च करने चाहूँगी से टॉपिक रे को मैंने काम कर आजिकल आम जब नेट देखा गूगल सर्च करदे ताले आम ओडिशा भितर के जन काम कर पर्टिकुलर एरिया रे ओडिशा बाहर के जन काम कर आम सब जिन को आम देखिपर जापर तेणु आटलिस्ट कंटाक्ट करूँ कंटाक्ट कलापर रिसर्च रे जॉइन करें बहुत बाट अच्छी किछिटा जगह स्कॉलरशिप मिले जदि आम एनआईटी आईआईटी किसी यूनिवर्सिटी आमको स्कॉलरशिप मिल जाए सेठी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप थाए आउ किसी जगह अच्छी जदि सेटा न हो नेट जेआरएफ देकी पिला माने रिसर्च रे जॉइन करि परिबे विथ स्कॉलरशिप तेणु से स्कॉलरशिप फीस बहुत बढ़िया है आज इट इज लाइक ए जॉब ओनली एबे जदि स्कॉलरशिप फीस देखिए इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 37,000 प्लस एचआरए जड़े गोटे पिला कौन दरकार निज पाठ पढ़िया 37,000 इज सफिशिएंट निज पाठ पढ़ी निजर सब खर्च भी अरेंजमेंट हो पारे आउ 2 वर्ष पर इट बिकम्स 42,000 प्लस एचआरए तेणु यहाँ गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब जॉइन करुचे आम एनआईटी हो आईआईटी हो किंबा थ्रू नेट जेआरएफ विभिन्न इंस्टीट्यूट रे ओडिशा गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप अच्छी जमी आम ट्रिपल रे आम ओडिशा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पाऊँ आज इक्वल टू द स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज स्पॉन्सरिंग दैट स्कॉलरशिप तेणु सेटा को भी आमको देखा पड़ो कारण खाली पढ़ले जोटा रही है प्रेसर्स दियंती जे नाई आम कंप्लीट करूँ कि नाई एत वर्ष पाठ पढ़ला पुणी रिसर्च करूँ तापाई खर्च तेणु स्कॉलरशिप ट्राए कराटा हूँ गोटे बड़ जिनस एंड लास्ट थिंग आई विल टेल व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर रिसर्च बी एथिकल जोटा भी आम रिसर्च करा चाहूचे एथिक्स वी शुड मेंटेन द एथिक्स ऑफ दैट वन जहाँ भी आम करुचे जहाँ भी पब्लिकेशन करुचे मो कामटा करी आउ का काम को आनी पब्लिश करी
सेटा होची गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट जिनस एथिकल जोटा कि आजिकल गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन नहीं उठी रिसर्च फील्ड रे तेणु समस्ते से जिनस चेष्टा करिया दरकार सर इज देयर सर विल टेल समथिंग अबाउट sir so somebody want to ask about engineering सर इज सर ओके हां सर नमस्कार मु जस्ट 10th पास होईची तो मोर फ्यूचर रे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऊपर इंटरेस्ट अछि तो मु को लाइन ने गले मु मो लक्ष्य हासिल कर परबी सॉफ्टवेयर इंजीनियर माने कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरेस्ट अछि ड्यू टू द सोसाइटी डिमांड्स और तमर निजर इच्छा अछि निजर इच्छा अछि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 10th रे पाठ पढुचो त प्रोग्रामिंग चलथिबो कोर्स थिबो ताको भलो करी पढो तापर प्लस 2 रे जेतो पढियो साइंस पढिबो माने 10th पास होचे प्लस 2 फर्स्ट ईयर हां सेम कहली प्लस 10th बेले पढला बेले किछि प्रोग्रामिंग थिला किंतु तुम जानलो जे तमर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरेस्ट अछि बोली सेम पचर जी जे केमिनि जानला तुम किछि प्रोग्रामिंग लिखुथिबो तुम भल लागुथिबो प्रोग्राम लिख प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नथिंग बट इट्स नॉट ओनली प्रोग्रामिंग हां तेणु से तुमको गोटे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी गोटे ब्रांच रे तुमको डिग्री इंजीनियरिंग करिया पड़िबो सेटा जहाँ भी पारे कंप्यूटर साइंस आजिकल बहुत ब्रांच हो गलानी तेणु जेकोसी गोटे ब्रांच रे तुम जदि करिवो आ पर कि तुम नॉलेज गेन कर परिबो ताल तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रे आराम से गोटे चाकरी जॉइन कर परिबो ओके थैंक यू अभिज्ञा भी हमारे साथ है एंड वो इसका आंसर दे सकते हैं और अनदर वन थिंग अगर किए भी धर बाहर फॉरेन रे पढ़िया पे हायर स्टडी करिया पे चाहूछ यू कैन आस्क क्वेश्चन पैनलिस्ट अच्छी ऑनलाइन अगर कोई भी बाहर पढ़ना चाहते हैं फॉर हायर स्टडीज इवन फ्रॉम इंजीनियरिंग टू अदर ऑल्सो वो क्वेश्चन अभी पूछेंगे सो किए बाहर पढ़िया को चाहूछ क्वेश्चन कर as well as engineering also, computer science engineering also. Good evening, I am Krishita Paul. I have just passed my 12th. So I am interested in higher studies in engineering of CS. So my question is ki what is the actually prospects of CS in future as in AI is taking over the market and what should I go on with studying? Avigda, can you hear us? You are on mute. You hear me clearly? Yes. 1 minute, please. Now we can speak. One minute, Dada, 1 minute. There is some technical issue, I think. Abhigda, okay. Sorry for the inconvenience. You can discuss about the computer science. Okay. So, yeah, I think he's there. Maybe. Are you able to hear Avik bhai? Hello. Am I audible? Putrunda, we can hear. Okay. So maybe Abhigda's thing has still to be sorted out.
So yes, I think it's an exciting time to be in computer science, definitely, because so much is happening in AI. But it is also true that the job market is changing. So I think we need to understand exactly how to cope up with this change. And I think once you are inside the field, then you will have a better idea. So it's very important to have one's foundations right. And if one's foundations are secure, then I think you will just be in the middle of a flow. And at some point in time, I think you cannot predict it right at this moment, but once you are inside the flow, you will have better ideas about where your tastes and inclinations are, because there are various different disciplines now inside computer science which have come up, and those new possibilities will show up once you are inside it. For example, in AI, there are things that you can do in terms of theoretical models. There are things in terms of systems, hardware and software that go alongside AI. And there are things in terms of the core programming that you have to do, and layers that sit on top of it. So once you are inside it, you will exactly know how these fields are kind of evolving and where exactly you fit in terms of your inclination. Someone who is theoretically inclined can contribute to the field in a way that's very much different from how someone who is, for example, inclined towards designing hardware or software systems for this. Here we have Abhigda, who is actually an expert in computer science theory. He did his PhD at Oxford. I think now he's pursuing his postdoc at Oxford in theoretical computer science. So, that's theoretical computer science, but inside machine learning in particular, there is a lot of work on theoretical machine learning as well. There are lots of possibilities, and I think you just have to get into the field. And you can get into the field from multiple areas, not just from within computer science. And you will find, I think, something that actually immerses you and engages you. And once you are there, I think, but you can wait for that moment. Maybe it will be good if I let Abhigda speak, and actually if we can also hear him. Yeah, thank you. Thank you, Sutananda. I hope that you can hear me now clearly. Yes. And so yes, Sutananda, I think, covered most of the important points. And as you said, there are many different fields and many different areas inside computer science that you can pursue. And in particular, as Sutananda was saying, because of AI, certain things will change. Certain parts of computer science will move towards different topics and so on. But there will always be something interesting to work on. That's, I think, my Thank you, sir. Opinion here. Lingarajda? I think she has understood. No? Having Yes, a foundation is very important. Maybe BTech in computer science, the core subject is the foundation. Once BTech is done, she can build upon the additional acquiring skills. Is there anyone who want to ask about any higher studies in biological science or chemical science? Then they can ask. Biology? Lingarajda is there, you can ask. Yeah, biology, agricultural science, biotechnology. Hello. Good Life afternoon. sciences. Good afternoon, sir. Hello. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 12th करली ख़त्म हुआ है, तो मुझे अभी कंफ्यूज हो रहा है मैं नीट दूँ या फिर रिसर्च लाइन में जाऊँ, एग्रीकल्चर जाऊँ. आई एम टोटली कंफ्यूज्ड. You are Odia? उड़िया. First of all, you have to see whether you are good in mathematics or in biology. Among these two subjects, which subject you like PCB, more? not maths. PCB. Okay. Okay, so you have physics, chemistry, and biology, right? Yes, sir. And then so you don't have mathematics in 12th class, right? No, sir. Oh, then you did a mistake. For studying biology, also you need mathematics. To cross a road, also you need अंक करियर पड़ेगा, रास्ता पार करियर.
କୋଉପଟୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରି ଅଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା anyway mathematics ନଥିଲା it's all right but now the choices are many either after 12th class you can do a graduation and masters together integrated degree in biological sciences or physical sciences or chemical sciences in IHAR and NIGER. इसके लिए एक एग्जाम होता है IAT and साल में एक बार होता है so you can write that exam if you qualify. There are many premier institutes IHAR at least 6 odd IHARs. IHAR Barampur in Odisha, NIGER in Bhubaneswar, IHAR Kolkata, Trivandrum and Mohali, Pune, भोपाल तो वहाँ पे कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है सो फिजिकल साइंसेस केमिकल साइंसेस में हम बीएससी एमएससी नहीं कर सकते हैं आईजर नाइजर में ये जो है फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे अच्छा चॉइस है आईजर नाइजर में जब वहाँ पे हम ग्रेजुएशन करेंगे दैट इज ग्रेजुएशन बाय रिसर्च तो हमें स्कोप मिलेगा लेबोरेटरी में एक प्रोफेसर के साथ कुछ रिसर्च लर्निंग होगा एक्सपोजर मिलेगा तो धीरे धीरे हमारा जो ओरिएंटेशन होगा थोड़ा रिसर्च साइंटिस्ट बनने के लिए जाएगा तो जब मास्टर्स में जाएंगे वहाँ पे भी रिसर्च करने का स्कोप मिलेगा ये एक रास्ता है अगर हम आईजर नाइजर में एंट्री नहीं कर पाते हैं मतलब आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ऑप्शन है हम कोई भी अच्छे कॉलेज में बायोलॉजी में एडमिशन लें बॉटनी है कोर सब्जेक्ट में बॉटनी है जियोलॉजी है ये सब्जेक्ट में लेना है मैं बायोटेक्नोलॉजी में हूँ आईआईटी में लेकिन मैं ये कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी में जाने की वो खिचड़ी है हाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स मतलब एक्सपर्ट नहीं हो सकते तो कोर सब्जेक्ट जैसे लिटिल बिफोर प्रोफेसर सुतनुदा फ्रॉम आईआईटी चेन्नई ही एम्फसाइज दैट एआईएमएल के लिए भी हमें कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में बीटेक करना पड़ेगा तो सर मैथ कंपलसरी लेना पड़ेगा मतलब मैंने हाँ नहीं है मैथमेटिक्स तो तुम्हारा नहीं है कोई बात नहीं जो हो गया अभी से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा अभी तो दोबारा से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते 12th क्लास में अभी बायोलॉजिकल साइंस पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स नॉट कंपलसरी होने से अच्छा है नहीं होने से भी चलेगा तो बीएससी बॉटनी जियोलॉजी में कोई भी अच्छे कॉलेज में करना है अगर फिर करके फिर मास्टर्स करेंगे लाइफ साइंस में कोई भी बॉटनी जियोलॉजी लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करेंगे फिर रिसर्च में एंट्री करेंगे बीएससी एमएससी करने का हम कोशिश करेंगे इंटर्नशिप करने के लिए जब भी छुट्टी मिलता है समर वैकेशन विंटर वैकेशन में कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जैसे अगर यू आर फ्रॉम भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर में एक डीबीटी का इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस वहाँ जाके करेंगे ओयूटी में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रिसर्च चल रहा है SWA में भी चल रहा है और काफ़ी सारे CSR लैब है जो मेटलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में है कटक में है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं पे भी हम प्रोफेसर को ईमेल लिख के जाके उनके साथ 1 month 2 month का थोड़ा एक्सपोजर लेंगे थोड़ा ओरिएंटेशन लेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइंड ओरिएंट होता जाएगा कि साइंटिस्ट की तरफ है ना और हम जो थ्योरी पढ़ते हैं जब कहीं पे एक्सपोजर मिलेगा लेबोरेटरी के ना तब बहुत मज़ा आएगा मतलब बहुत चीज़ जानने के लिए इच्छा करेगा तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए थैंक यू सर Thank you very much, Lingarajda. If anyone wants to ask anything about biology, okay, then ask us. Good evening, sir. My name is Nishant. I have finished my PhD from Niger recently, last year, and I have applied for postdoc positions outside also quite a lot. And I just came here for some new experience if I should continue applying outside. निशान जी तो सेल बायोलॉजी से मेरा PhD हुआ है सर नाइजर कहाँ से कौन से लैब से है सर डॉक्टर चंदन गोस्वामी इट इज इन सेल बायोलॉजी क्या सॉरी क्या सेल बायोलॉजी आयन चैनल ओके आयन चैनल्स आयन ट्रांसपोर्टर्स सो आपको अभी PhD में आयन ट्रांसपोर्टर्स आयन चैनल्स में PhD की है हमें पहले एक माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि PhD जो है ना दैट जस्ट एक हमें एक एक्सपोजर मिला वी गॉट टू लर्न हाउ टू डू रिसर्च
बट पीएचडी में से रॉकेट साइंस रिसर्च हम कभी भी कर नहीं पाते हैं। Sure. तो कुछ सीखे, कुछ जाने, पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर कैसे पढ़ते हैं, एनालिस कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपेरिमेंट कैसे सेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, डाटा कैसे लेते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और रिव्यूअर के साथ मिलके पेपर को कैसे पब्लिश करते हैं, उनका एड्रेस करते हैं, उनका क्वेश्चंस आंसर देते हैं। तो ये हमारा अच्छा लर्निंग हुआ। अभी क्या है कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के टाइम आया। आप अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, मेम्ब्रेन चैनल या जो भी है उसके ऊपर रिसर्च किए हैं, उसका जो रैमिफिकेशंस है डिजीज बायोलॉजी में, ह्यूमन डिजीज में, मेम्ब्रेन के जो रेगुलेशंस है, मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट या जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके ना, मेरे ख्याल से सेम सब्जेक्ट में कंटिन्यू नहीं करके, मतलब एग्जैक्टली सेम जो पीएचडी गाइड का टॉपिक है ना, दैट इज देयर प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल राइट्स, वो नहीं करके हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, उसको रखेंगे। यस यस। तो आप क्या करेंगे, जितने फेलोशिप प्रोग्राम्स है, अभी अभिक भाई भी है ऑक्सफोर्ड में, तो आप जैसे जो JSPS हो गया, जापानीज फेलोशिप हो गया, आप मैक्स प्लैंक में आपका जो डैड फेलोशिप हो गया, अलग अलग कोरिया का अलग फेलोशिप्स है ना, साउथ कोरिया का, तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग फेलोशिप प्रोग्राम है, वो आप पोस्ट डॉक फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं ना, ये एक प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ आप लिंक्डइन में आपका जब रिक्वायरमेंट देंगे, पोस्ट करेंगे, तो आपको बहुत सारा पोस्ट मिलेगा, ओपनिंग, पोस्ट डॉक ओपनिंग यूरोप में, अभी खास करके यूएस में अभी अप्लाई करना थोड़ा टफ है, यूरोप में आपको चांस ज़्यादा है, यूरोप, साउथ कोरिया, चाइना भी अभी टॉप में चल रहा है। यू शुड नॉट इग्नोर दैट फैक्ट। लर्निंग के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो चाइना भी जा सकते हैं, और जापान तो हर समय अच्छा ही रहा है। ताइवान है, ताइवान में एकेडमी सिनी का ताइपी है, तो एशियन कंट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, आप अप्लाई कीजिए। वहाँ का जो प्रोफेसर के पास अपने फंडिंग है, पोस्ट डॉक अप्लाई कीजिए। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका जो LOI, जो आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो क्या कंटेंट है, कवर लेटर उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। हाँ, तो कवर लेटर ईमेल में बहुत लंबा मत लिखिए, क्योंकि रोज हमारे पास जैसे मान लीजिए 10 तो पोस्ट डॉक एप्लीकेशन, तो सबको हम खोल के नहीं पढ़ते हैं, टाइम ही नहीं है। तो आपका जितना प्रिसाइज कंसाइज लिखा होगा, आपका इंटेंट जितना पर्पसफुल होगा ना, तो वहाँ पे साइकोलॉजी स्टडी किया जाता है। तो आप वो लिखिए, तो कवरिंग लेटर जितना अच्छा होगा तब प्रोफेसर इंटरेस्ट लेगा। और ये लिखिए, और एक है, आप ना जब तक आप पोस्ट डॉक नहीं हुआ है तब तक आप जो एम्बेसी फेलोशिप प्रोग्राम है, फ्रेंच एम्बेसी फेलोशिप है, मैक्सिकन एम्बेसी फेलोशिप है, पोर्तुगीज एम्बेसी फेलोशिप प्रोग्राम है, वो इंडिया में जो दिल्ली में जो एम्बेसी है, वो एम्बेसी का वेबसाइट में जाने से आपको मिलेगा। 6 months 1 year प्रोग्राम है, उसमें वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट, एयर फेयर टू एंड फ्रो देते हैं, रिटर्न फेयर भी देते हैं, तो आप जाएंगे तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। Thank you very much, Lingaraj. Now I want to disclose we have time constraint. So if anyone have question regarding environmental science, wildlife, ecology, or related to these fields, they can discuss with me. And who have questions regarding medical science, they can discuss with Dr. Bhubaneswar sir. We all are here. So कोई भी डिस्कशन करना चाहे तो हम लोग इधर हैं. Right now we have little bit time constraint, so we will conclude within 4-5 minutes. सर मेरे को अब्रॉड स्टडीज़ के बारे में पूछना है, हायर स्टडीज़ के लिए। ओके ठीक है, वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आस्क। मैं अभी NIOS में 12th एग्ज़ाम देने वाली हूँ, मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, और मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ हायर स्टडीज़ के लिए मेडिकल लाइन में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेडिकल लाइन में वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, और मुझे अभी 12th के बाद ही जाना चाहिए या ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट करके जाना चाहिए? You have not yet entered medical sciences, I suppose. Yes, sir. You have not yet entered medical sciences, is it? No, sir. 12th pass? हाँ. Okay. You want to get degree certification from abroad, not from India. That's what your question is. That's what. First of all, you have to clear in mind why you want to become a doctor
What is your purpose? Why you want to become a doctor? Why you have chosen this medical science? To practice, to have good earning, or to serve people? What is your purpose? The people means which people? How you want to serve people? Getting education doesn't necessarily mean you have to go abroad always. Why you have decided to go abroad? To get your education in medical science? Okay? If you ask me, I have got degree MBBS from India, that Odisha. I have got degree of MS General Surgery from India, from Kanpur University. I have got degree in cardiac surgery from Delhi University. Usually in medical science, it is always better to have a degree, at least bachelor degree from India. Afterwards, after getting bachelor degree, you come to know what medical science is all about. You have some idea whether you want to do some research work, or you want to do some clinical services. For clinical services, my sincere advice, don't leave your country. Don't leave your country. For research work, definitely, you will get good opportunity outside India for medical science, okay? So that you have to decide, what is your interest? But for getting a bachelor degree, I would suggest you get prepared to get your degree from India first, bachelor degree, then you have some idea about medical science, then you consider whether to go for abroad for further degree or not. Second, first is what is your option, what is your attitude, what is your focus. If you do clinical services, always better to stick in India. Go for some time to get exposure. But in technological world, as of now, there is no need to go outside. Clinical materials means patient. There is no dearth of patient in India. Where it is a patient, there is no dearth in India. Rather, people are now focusing on India and China to get patient. Okay? And if you are an outsider to their country, they will not always allow to handle. For a surgeon like me, if I have got degree from India, I am going outside a US or a European country, unless I have to be extremely brilliant to get opportunity to operate upon their patient. There is another factor, okay? So lot of issues will be there you have to face if you think about going abroad, getting degree and settle in profession, okay? If you are doing research, it's good. Okay, you got your answer? Thank you. So thank you. Right now, we have a time constraint. Anyone want to ask anything about higher studies? We all are there, so you can ask us outside. Okay, so we'll go to the next program. 1 minute. Thank you so much, Lingarajda and Ovigda, for joining. Jai Guru. Okay. Thank you, Dada. Thank you. So now Professor Ranjan Malik will felicitate our panelists. Thank you so much, sir. Moving on to our third plenary session of Management, Corporate and Business with Engineering Industries, we are honored to have Mr. Surya Prakash Mahapatra as our moderator, Mr. Kalinga Keshari Rath, Engineer Prashanta Kumar Panda,
Dr. Partha Tripathi, and Mr. Titas Nandi, and Mr. Biswajit Gowda. I now invite our distinguished panelists from Management, Corporate and Business with Engineering Industries to please join us on the dais. क्वेश्चन पचारे रिलेटेड टू आपन को पैनल रो जहां भी हम ओपन कर दें आ जहां भी डिस्कशन अछि रिलेटेड टू व्हाट कॉर्पोरेट रिलेटेड सेटी वाला मु सेटी जाउ कंफ्यूजन हो क्वेश्चन आंसर सेटा पचारि क्वेश्चन रो आंसर करना Jai Guru. So let me welcome all of you to the next panel discussion, plenary session, Management, Corporate, Business with Engineering. So we have an illustrious panel here. We have Mr. Kalinga Keshari Rath, MD EVOS Buildcon Private Limited. You listened to his inspiring speech in the morning. We have also on dais, Engineer Prashant Kumar Panda, who is Principal Data Scientist, TCS Bhubaneswar. Online, we have Mr. Siddharth Das, AI Engineer at Ford, US. We also have Titas Nandi. I am Ahmedabad Operation Design Lead at CureFit, ex-consultant Deloitte. And we also have Sri Biswajit Gowda, Salesforce consultant from United States, Minneapolis. So it's my privilege to welcome all these expert panelists into this plenary session. So we will try and make it interactive. So instead of kind of spending a lot of time talking, because you have listened to a lot of talks already, I will start with one question for every panelist. Then we'll follow up with questions from you, right? So my question to each panelist would be, in brief, please tell us what are the opportunities in your field, right? And what challenges, excuse me, you see when an aspiring young professional wants to get into your field, what challenges that they should be prepared for? So that's a common question for everybody. I will start with our panelist on stage, and then we'll move to our panelist online. So if I may start with Mr. Prashant Panda, why don't you start with opportunities and challenges? Thanks. First of all, I would like to thank all of you for giving me an opportunity to talk to you. Thanks, Surya Bhai. Thanks, Kalinga. I feel young whenever I interact with students. This is a long time I have come across the education. Coming to the first question, the opportunity and challenges. So, first of all, we will start from the challenge. This is applicable to me. It's applicable to all of you also. All of our students. So, do you know what is your interest
in which area you are studying, or it is exciting to all of you? First question. So that answer you have to find it out. If that is yes, this is the first point. First hindrance, or first we say that ladder we have to overcome. First the interest to, actually some people nowadays, every college you go, they say that it is computer science. But that is not, if computer science is not interesting for me, so whatever effort I put there, that may not be fruitful to me, end of the day, because that is not interesting at all to me. So for example, I am interested in semiconductor. So that field is exciting to me. Initially I may not know that, so I have to find it out. How, next question is how I have to find it out? I have to find it out through interaction with all of your peers, all of the seniors. Even if nowadays many things are open, you can do the Google search, you can read many articles. So that is the first point. Once you find it out that this is my interesting point, then 50% of your effort has reduced. Next thing is, what are the opportunities? Opportunities, I would say that is enormous. So nowadays many AI activities has come, people say that your job is going to loss, so something. But I believe in 2000 era, that was the year of 2000, year 2K, Y2K. So many lost job will be lost, but we went in a different direction. So it is assisting me in different directions. You go back, maybe 5 years, 10 years you go back, coding was a very important thing. And the people who were able to do the code, they were getting rewarded. I am not in that category, I am a poor coder. But now, you see that part, even if you are good coder, bad coder, doesn't matter. You ask the simple things, you will get very interesting code. There are different AI tools available. So the whole point is, your opportunity is infinite. First you go get the hurdles first, clear the hurdles first, then go, your opportunity is infinite. Thank you. Kalinga bhai, if you can talk about opportunities and challenges. You know, I would like to say one dialogue, that is, it's not your goal is too high, you miss it. Your goal is too small or too low, you hit it. If your goal will be reaching on star, then you may reach at moon. But if your goal is to reach on this second floor only, just above this floor, then you will hit the ceiling. So it's not your goal is too high, you miss it. Your goal is too low, that's why you hit it. So you must have write your goal, because writing goal is 50% job done. Because what exactly you want in your life, take a plain sheet of paper right now. After this meeting, just take a plain sheet of paper and write down what exactly you want in your life. And then find 21 ways how you can do it. I can give you guarantee your life will be changed, dramatically changed. If I give you 5 minutes of time and take a plain sheet of paper, you do this exercise at your home, what are the opportunity for me? You know, opportunity, good luck happens when opportunity meets preparation. Good luck happens, luck is the residue of design. Good luck happens when opportunity meets preparation. So take a plain sheet of paper today night itself and write down what exactly you want in your life without any judgment. And then you select one, the most important one. It may be your financial goal, maybe your health goal, maybe your relationship goal. And then write down 21 ways how I can fulfill. And always write the goal in present indefinite. You know, if you take a plain sheet of paper, you think it and ink it. You think it and ink it. Because whenever you are writing, you are not writing on pen and paper. You are writing your own hard disk. So today I request all of you, today you do this exercise. You write down your goal every single day. Because what you think, most of the time, you'll become that.
It's a universal statement. You become what you think most of the time. I become what I think most of the time. That is why to have a better human being, you need to spend quality time with people, those who are better and smarter. Chances is there, you may drift towards them. That is why we say you do satsang, you spend time with Sri Acharya Dev, spend time with Sri Avinda. Why? Because they are superior human beings, they are the better human beings. They are capable in every respect, they are perfect in every respect, every field. So that is why, and if you talk practically opportunities in my company also, I have right now 100 openings. I need, in engineering, I need people in building, people in contracts, people in civil engineering, lots of junior I need. Today also we are doing campus in Xavier University, XIMB, we are doing campus. I need people at VP level also, I need people at junior trainee level also, I need people at intensive level also. Just a few hours back, I said one person that I need high-rise experience because we are doing a 42-story building with the tallest tower of Bhubaneswar. So I said, why can't you join in our that project, EVOS Alchemy? So you will get the experience. So if you talk about opportunities, I say that you are not, you are saying that I want to be rich. Suddenly, it's a smoke thought. Cigarette pita na smoke thought. ऐसे ही cigarette पिया तुरंत हवा चला गया. You are not serious actually. If you are serious, then there are lots of opportunity for you. Are you serious about it? You take the full responsibility of your life. Nobody is going to take care of you. You have to take the full responsibility what is happening inside your life or outside your life. Thank you. Thank you, Kalinga Bhai. I think he already mentioned that there are 100 opportunities in his organization. So if interested, you must meet him after this. Bishwajit Bhai, I'm very happy to see you online after a long time. You are a Salesforce consultant, so why don't you talk about opportunities in your space for the benefit of our audience? Thank you, Surya. It's good to see you after a long time, though virtually. And Yes. This same very institute, I graduated, I think 16 years back. So it's good to be back. And I know, I think one of our panelists have been saying, right? So that times were different. We're searching for good coders or good developers. And so right now, thinking on the lines of your question, challenges and opportunities, I think when we're starting, in entire ITR or now SOA, so all people were picked up, right? So right now, those junior developer roles, maybe AI can write better code than or faster code than me or all of us, I guess, right? So right now, how do we best use that? For instance, in where I work, right? So if for a particular project, if we were to hire 10 developers or engineers, we need maybe get away with 2, right? But those 2, how you should be, you shouldn't be just writing fast code, right? So because that AI can do better job at that. So how smartly you are using it? Are you asking the right question to get what you want? So you have to show that adaptability, that smartness in your field. And one thing I would say, at your current stage, right? So try to prepare evidence. Right? Evidence speaks better than what your intention is. So even if it's a small project, small case study, whatever you can, get into, small, maybe I think internships are better, right? It gives you exposure. And I would say whatever you get at hand, just take that as a stepping stone. Don't try to get to that perfect job that you want immediately. So whatever you get at hand, take it as a stepping stone and then ride that wave. So that is kind of my, in terms of the current market and how you position yourself. And one important thing is I know, of course, you will try to go on the online portals, different sites and stuff. Try to connect with people, your alumni, your seniors, or in every field, right? Whatever the rules that you want, talk to people like that. How are their day look like? And from there, you can gather the idea or the current trends in market and get to that. So I would think that is one of the things. And these are the challenges and opportunities I blended together, I would say. So
Yeah, I think Sure. I would hand it over to you, Dada. I know we have Sure. strictly No. time, but if any No, speak thank you. questions, we can. Thank you. Very well said. I think you talked about some important qualities that the students need to develop today, and I'm glad that you graduated from this institution, and this is your way of giving it back to the younger generation. Thank you so much. Siddhartha, why don't you share briefly about opportunities and challenges in your space? Sure, Dada. So I work in AI, so I see a lot of people are getting scared of AI. So I would like to address that issue. So that's, I think, the biggest challenge right now in software industry is AI. Well, everyone is scared like AI will take their job, but I would say like AI is just a tool. If you master it, then there will always be an opportunity. Actually, AI has opened a lot of opportunity that was not there before. And people are saying like right now in this decade, no, means people have the biggest chance of becoming millionaire or billionaire with means using AI. So one example I would say like right now in my office means I work at Ford. So what I'm seeing is like everyone who doesn't even know to write a Python code, even a single line, they are using like LLM and making a software in 1 hour or something, and they start using it. They don't even care about like debugging the issue. Whatever issue they get, they can put it to AI, and it resolves the issue and keeps improving on it. So I would say like that has become a challenge for people who means particularly who are fresh graduate trying to enter the industry, because there is no more need of a software engineer. I would say like to put it in a more aggressive way, there is no more need of a software engineer just to write code. So either if you want to go for software engineering, you learn how to make a product. Now means you can go in the product design side or means product development side, what all is needed for a product. But if you want to go in AI as well, like in depth in AI, there are a lot of roles you can go in AI as well. It's not just the AI developer, like just training the models and deploying models. You can go in AI inferencing, how you do the inferencing on hardwares. You can go in AI deployment side, that's called like ML ops or AI ops. That side also, that is also another aspect. There is also an analysis aspect of AI. Annotation wise also, how you can do like automated annotations. So there are a lot of aspects, even in AI, I can discuss in details in one-to-one sessions. And also I would say like, with the growth of AI, that has also increased the demand of semiconductor and other things. So you can, so that has opened a lot of opportunities in semiconductor and other fields. You can also look into those industries as well. Thank you so much. Very informative and insightful. Titus Nandita, why don't you share? And you have rich experience in operations design and consulting. So opportunities in your area, what people, young students can look for. Sure, Dada. Jai Guru, good to meet you, Suryada. We are both from Bangalore, but good to meet you virtually. So yeah, I am someone who can give a perspective from both ends, I feel, because I have done my computer engineering from IIT Patna. Then I also worked in the data engineering field. But then I have moved to management. So I'm someone who has seen both sides of the coin, though I just have like around 7-8 years of experience, like much more experienced folks are there on the panel. But a lot of people have talked about computer science opportunities in AI. Maybe I'll talk a little bit about management consulting and even management opportunities in the industry, because that's where I am from. So I think I should give a little bit of brief about what management consulting is, like what this business is. If any of you are interested in doing an MBA, this is one of the most sought after jobs after MBA. I had almost a 5-year management consulting stint with Deloitte, and now I've joined CultFit, which is currently India's largest fitness chain.
in operations design. So think of it this way, going to the opportunities first. If you think from a CEO or a CTO's perspective, right, the person who actually runs the company, they only care about two things mostly. One is, like, if you have looked at a profit and loss statement, you would know that at the top there is the revenue and at the bottom there is cost, right? So as a senior executive, any problem that you want to solve is either that you want to grow your revenue or you want to reduce cost, right? So what management consultants help do is solve any business critical problem that a senior executive in a company might have. So as I said, like, growing the revenue or reducing the cost. Now, if you have to grow revenue, what challenges would you face, or what opportunities would you have? Like, how do I grow my sales? How do I set up my business in a different geography? Like, currently, I am working on that in CultFit. Like, in PureFit, as we expand from the top 6 cities, like PureFit, for people who don't know, is a fitness service chain. A lot of people in Bangalore or Hyderabad or Mumbai would know it. So how do we expand from the top 6 cities to the next 100 cities? That's a problem that would grow, solving which would grow your top line, right? Your revenue. Other problems can be, how do I improve the distribution of my product? What channels to use? So those are revenue side ka problems. Like, how do I grow my company? The other is cost side problems, like, how do I improve my processes? How do I set up my organization in a way that I can achieve whatever business goals I have? Like, during my stint at Deloitte, I worked with this pharma company, and they wanted to move from producing just one drug to almost 6-7 drugs. So they wanted to set up their organization in a way that they can achieve those goals, move to a multi-asset organization. So it's an interesting space. You get to work with CEOs as well as their just direct reports. So yeah, like, that's, if something of that interests you, I would be very happy to answer questions. In terms of challenges, I think there are 2 key challenges that we face in this business. One is ambiguity. Like, think of it this way. Like, I think Suryada was also talking. We live in a VUCA world. VUCA is a term that we use. It's an acronym for volatile, unpredictable, complex, and ambiguous, right? That's the kind of uncertain. That's the kind of world that we live in. So think of it this way. A CEO has been running their company for the past 10 years. Why do they need an external person to tell them what to do? Isn't that like an obvious question? But a CEO, when they are running their business, they're too involved with their own company's problem. They need some external perspective. Like, they want to understand what are the trends in the industry. Someone who has solved a problem with a different competitor, they cannot just go and ask the competitor, right? They would not get that intelligence. So they need someone who can take confidence in the bets that they want to take and help them with that. So a person who can excel in management consulting is someone who is really good with ambiguity. You will never get perfect data. You will never get perfect answers as compared to something like computer science, because I have also been there. There are no perfect answers in this field. And people who are very good with their communication skills, who have a polished executive presence, those people excel a lot, because you need to be very crisp and very logical when you talk to a senior stakeholder. They might just have 5 minutes, but you need to give your recommendation within that time. So people who are good with soft skills, who are good with handling ambiguity, who have a wider horizon and thought process, they have a lot of opportunities. And I'm telling you, such people are very less in number. So that is one of the challenges that we face. So yeah, happy to take more questions and really happy to be here. Thank you. No, thank you. Thank you very much. I think you beautifully articulated the opportunities and challenges. So now, students, you have listened to all the panelists and you know what are the opportunities in their space: computer science, real estate, consulting, operations design, IT, all of that. Now, and you also know challenges, what challenges that you might encounter if you want to get into that space, want to make a career in that. Now it's for you. We'll open it up for questions. Now that we have a broad view of what you might get into if you get into this industry. So keeping that context,
what questions you have. I'll invite you to ask questions, and our esteemed panelist will try and respond to you. And we have over 10 to 12 minutes. After that, we'll continue. We'll be outside for one-to-one conversations. Yes, so we're opening for questions. Yeah. Yes. Right now, I'm in my 4th year, and I'm pursuing CACDS, like I'm doing my BTech as of now, and I'll get it done by September itself, July or September. So I'm thinking of opting for MBA. And my question is that how do I do that? Because my profiling, like my result is not up to the mark. I have a very average academics throughout. And maybe in my 12th, I was not that good too. So my question is, how do I make my profiling better, and how do I apply for colleges? How do I apply that? And what is the best exam which I should give in order to get the colleges? Because people only talk about CAT in order to get into IIMs. But I want to target tier 1.5 colleges like NMIMS or Symbiosis, Christ. So what should I do? Yeah, so you have what have you completed? So BTech, I'm actually doing it right now. You've done your BTech? Yeah, I'm doing it right now. And you want to do MBA now? Yeah. Okay. Prashant bhai, you want to take up this question? There are a number of opportunities. So, as Kalinga bhai said, if you target higher, then you can reach. If you target lower, so you can hit easily. So, you target for CAT, definitely you will be succeeding, Symbiosis, etc. So, that will be easy go. So, my suggestion would be target for higher. If you target to star, at least you can reach at moon. Thank you. Yeah, if I can add, so you can definitely, I would agree with him. You can target for CAT, and the preparation will help you. And I don't think your current marks will place, of course they have a threshold. I'm assuming that you have got the minimum threshold for CAT. If you have it, I think the exam is very different from what you have been studying in your BTech, right? Prepare well, right? Prepare specifically for CAT, and other exams are also of similar nature. So that will definitely help you. I don't think you should worry too much about how much marks you have got. Now just focus on your preparation. So one more question. Since they always go for people who have experience beforehand, before doing MBA, and right now I'm not thinking of going into job because the type of opportunities I'm getting as of now is not up to that mark after doing BTech. So is it necessary that I should go for any opportunities that I'm getting as of now? Or should I focus for MBA only and I should not go for jobs? So, okay. Just briefly. See, there is no hard and fast rule what approach you should take. I know people who have completed their graduation, then MBA, and then gone for a corporate job. And there are people who have taken a break, they worked for some time, then gone for a higher education, like MBA or whatever. So it depends on your context, what do you want. If you get the job and work for some time, that gives you practical experience. When you do an MBA, you can relate to what they're teaching you in the classroom, right? And on the other hand, if you continue your education at one go, because many people, once they get a job and then get into the rhythm of working, earning money and all that, there's a lifestyle change, getting back to academics becomes a little difficult. If you have the willpower that you can work for some time, get back to higher education again, you can always do that. So it depends on your context, your family situation, where you are in life, and what you want to do. Kalinga bhai may want to add something. There are 5 phases of a life, and the first phase is the education phase. 17 to 27. I think you are more than 17, right? So 17, is a particular age where you can have the certain kind of maturity, so that you can understand the practical life. So 17 to 27, if you have money to buy a flat also, you put all the money in education. So 17 to 27 is the education phase, and then 28 to 35 is leadership phase. So you have to learn a lot of things by practical experience. And then 36 to 45 is risk phase. Whatever risk you want to take, 36 to 45 is the best age to take risk. And then 46 to 55 is the wealth phase. Any billionaire, multi-billionaire, zillionaire, jo bhi aap dekh lijiye, all are at the age of 46 to 55, they have earned that.
And then 56 to 65 is the security phase. You consolidate everything, whatever you earn in land, real estate, stock, bond, gold. You consolidate everything, and if you go for the security phase and travel all over the world. So my suggestion will be 17 to 27. You try to continue education fast, because if you do job and then focus on education, then what will happen, for exam, you may not prepare that kind of, you will get the practical experience. That will help in practical experience, acquire the practical. Suppose you will do MBA fast in IIM Bangalore, suppose. You will not get practical exposure. Once you join in any company, then you can relate to that theory. But if you do job and simultaneously you will do MBA, you can relate easily. But as because of the job pressure, you may not prepare yourself to appear for the exam. So that is the only constraint to get score, because Indian education is such a system that you have to get score in the exam. But if you go abroad, then they are not concerned about the scoring. Their concern is what you are good at, what is your interest, where you can produce results. So according to Indian education system, as we are in India, so my suggestion will be you complete academic education and secure as good mark as you can, and then go for your practical field job. Thank you. Sir, one more question I have. Can I ask it right now? You want to ask? No, sir, in general. In general. Yeah. So the thing is, sir, even though I have clarity about the purpose which I want to pursue, people around me, like my family member or everyone, is asking me question why I want to opt for MBA after doing engineering, because people generally think that after engineering you will go for MTech and do higher studies. And they have this question ki in corporate world there are no jobs, finite jobs as of now. You can be cut off, and you can be you have no security. So, and my purpose is that I want to go for this kind of job, because as sir said, Tita sir said that you have to have a logical thinking, analytical thinking, and you need to have soft skill. I think I do have those qualities as of now, so I want to work on that. But how do I make my parents understand that it's better to opt for MBA and not opt for MTech? Yeah, I will like to answer the question. You said security. Your parents, they need security. As you are a girl, and again they need a secure job. Security, the more you seek security, the less you have it. And the more you seek opportunity, the more you have security. You can share this to your parents, but if your parent may not understand, then you have to convince your parents in any way. You have to convince, because you have to manage engineers. That is why you are going for MBA. You have to manage people. In 21st century, anybody sitting in this hall, I am giving you guarantee, including the people those who are sitting in the dais also, and people those who are online. In 21st century, whatever skill you are having, but if you don't have two skills, I am telling you two skills, you cannot succeed in anywhere. And what is those skills? Number one is people skill, how to deal with people. And number two is selling skill, how to sell. Sales doesn't mean to sell only products. Sell your ideas, sell your concepts, sell anything. So in 21st century, you need two skills. One is people skill, how to deal with people, how to get work out of people, how to maintain relationships, cordial relationship with people in anywhere. And you need selling skill. Anybody, this is applicable for everybody. All right, I think, yes, I think Mr. Kalrat beautifully articulated this. If you have to add anything, I would say, if you have the clarity of purpose, if you're very clear in your mind, will you be able to articulate that to your parents? Yes, sir. And after listening what you said, only I was talking about it, that I do have the clarity, but people around me might not have that. So if you have the clarity, and if you can articulate the same clarity to your parents in a manner that they will understand and allay their fears, then you should be able to achieve your goal. We are actually running short of time. I know there are more questions, but we will not be able to take because we have to start the next session. But there's nothing to worry. We are out there waiting for you to come there and ask your questions. All right, Thank you very much, the panelists, online and on stage. Thank you for your beautiful insights.
Thank you so much. Thank you everyone for making this session so interactive. Now I will request Mr. Surya Prakash Mahapatra sir to felicitate our panelists. Thank you so much, sir. Now I will request Mr. Kalinga Keshri Raj, sir, to felicitate Mr. Surya Prakash Mahapatra, sir. Thank you. Thank you so much. Moving on to the fourth plenary session, I now invite our distinguished plenarist. I'm honored to have moderator Dr. Rishikesh Senapati and panelist Dr. Trinath Maharana, Dr. Pramod Kumar Raut, Dr. Kalinga Banopadhyay, Dr. Priya Ranjan Sahu, Mr. Hari Prasanna Sahu. Thank you. So we are welcoming agricultural technology panelists. So any question regarding this field, you can definitely reach out. All of you are requested to come forward. Please everyone come forward. And have your seats. So now we are going to start our session 4. So at the outset, I offer my
heartfelt pranam before my love Lord, Param Prema Sisi Thakur Ankur Chandra, Param Pujva Sisi Achadev, and the blessings of Pujabat Abhinda. He has inspired the organizers to organize this type of seminar. Perhaps this is the first of this kind, where we have assembled number of students from different branches and from different universities, also colleges. And the sessions which are covered already, 3 sessions have been covered. In this session, the panelist is my revered teacher and international famous scientist, horticulturist, Professor Trinath Maharana. He is also Sapratirithik of SATSANG. Dr. Pramod Kumar Raut, he was former principal scientist, Indian Council of Agriculture Research. He is one of the national level reputed animal scientists. Prior to that, he was the principal coordinator of one project of ICR. And at present, he is continuing as the director of research in Centurion University. Then Dr. Kalikinkar Bandopadhyay, he is continuing as the principal scientist in the Indian Institute of Water Management. This is under the Indian Council of Agriculture Research. This is a premier institute right at Bhubaneswar. And Dr. Priyaranjan Sahu, and he is from NRM side, Natural Resource Management. Basically, he has completed his master's degree, PhD in Soil Science and Agriculture Chemistry, and he is guiding and heading the Natural Resource Management. Tina sir is from the plant side, although he has completed, he was the professor of horticulture, and he was very favorite to Param Puja C.C. Barda and C.C. Dada. And he himself has developed, by the inspiration of Param Puja C.C. Dada, number of medicines, herbal medicines. And by the blessings of Param Puja C.C. Dada, and by the inspiration of C.C. Achardev, this team is also engaged with the writing of one book, very big book, Param Prema C.C. Thakur Ankur Chandra's version in different books, literatures, etc., on agriculture and allied subjects. Dr. Priyaranjan Kara, now he is continuing as assistant professor and also scientist, pisciculture, and he has completed his fishery science, master's degree, PhD, and now he is continuing in the international forum. So another scientist, and he is from BHU, he is a pathologist. He is Hari Prasan Sahu. Now he is on the online. Due to some difficulties, he couldn't get the holiday, so now he is also online. So now we have the agriculture and allied subjects, particularly plant science, animal science, natural resource management, and pisciculture, all are there. So I think just we can introduce, because this session is having only 40 minutes. First of all, we can devote some time regarding the scopes, opportunities, and the future of the agriculture science, which is a vast science. So now I invite my teacher, revered teacher, Professor Trinath Maharana, to give some highlights regarding the future of this agriculture and also the plant science. Trinath sir. So good afternoon to everybody. As Dr. Senapati has informed me to tell something on plant science, Sri Sri Thakur has given a lot of importance to plant science. How we will deal with the plants. The plants requires water, they require soil, and requires air. So, and
requires many natural resources. So they must be, as per their requirement, they must be grown, and also outside inputs. For example, we are now thinking of pesticides, and use of pesticides, lot of pesticides has created lot of problems for human society, and use of polythene in agriculture has created a lot of things. So, Sri Sri Thakur has given lot of importance for integrated research. People from all disciplines should sit together and decide the research content, research attitude, then they will finalize whether a program will be beneficial to humankind or not. Even there is 1 or 2% is very hazardous to mankind, we should not go ahead, or we should take preventive measures, as has happened with the polythene use in our society, and it has created a lot of, even the threat to the existence of the atmosphere and earth, life, all these things. Sri Sri Thakur, once many of the people, not very literate, one farmer came, he used to carry a lot of vegetables many a times, he himself grow in his field. One day Thakur asked him, how many crops you are growing in your field? He answered, Thakur, I am growing 4 crops. This is, we call in our science, intensity of crop. So intensity of crop, many of the field we have seen in our state, hardly we grow 1 crop, and many places we grow 2 to 3 crops, so 1.5% or 150 times in case of this, we call this crop intensity. The farmer replied, Thakur, I am growing 4 crops. Now can you grow 12 crops in your field within 1 year? He was astonished. How, Thakur, I can grow 12 crops in my field? It was 1944. At that time, nobody thought it, only few farmers, very intelligent or very sincere, they were taking this type of venture. He wanted to know from Sri Sri Thakur that why we should go 12 crop, how it can be grown. Now you have to grow it, because the cultivated area will be encroached by the rail line, by the roads, by the industry, and by housing, and every day you will find few lakhs hectares of land being encroached for other purpose. So automatically it will shrink. So you have to grow it. So now it is to be duty of the plant breeders, soil scientists, water, technologists, everybody, that how we can grow 12 crops. Presently it may not be very important for us, but in future we have to grow it. Sri Sri Thakur visualized this for long back. Another Sri Sri Thakur has visualized that many of the wasteland, there were plenty of jungles, they have been denuded, and the forest area is decreasing. So many of the unutilized land and those things, drought areas, so they should be improved by growing different crops, so that they will be help to retain the environment in better health, as well as whenever there will be scarcity of the land, then they can be converted. We didn't know that your anona or sitafala is so important. It was growing in the backyard and many other places. Jamukoli, your jamun, is so important. It is sold at a high cost. And many crops you will find, jackfruit. Now many governments, they have started jackfruit mission. So plenty of opportunities is there for increasing the food production,
and Sri Sri Thakur has visualized, there will not be much of problems if we will think in that direction. Sometimes we do not think much. Similarly, many of the plants required for our health, and Sri Sri Thakur has told anybody believing me, he must take the Thankuni. And Thankuni is one of the miracles of plant. It can control 36, 37 types of the diseases. It is a detoxifying agent. But we have neglected because we are going in a different directions. So Thankuni one should take every day, and it can do lot of help to the people. And now it is the material is not available because this is a crop we cannot grow, and by growing also we may not get sufficient benefit, profit. So now from different places, from wild we are collecting this Thankuni. There are many types. In IHR they have collected different types. So those they can be grown very quickly, and like this. Like this Thakur, Sri Sri Thakur has told that any of the byproduct, suppose paddy is being grown, and lot of you know how much of air pollution, environmental problem is happening around Haryana, Delhi and other places. So these are things converted to other places, other items. And any product is available in plenty or in distress sale, they can be converted to processed products. So things are very easy to think, and it is easy to conduct research, but we have to do that. And to develop the career, I do not want to take much of your time, but Sri Sri Thakur, I will conclude my speech with a small story. It is a real story happened around Thakur. Sri Sri Thakur, one day a person came and complained that my son will be a dacoit or a thief. Sri Sri Thakur told, why? Now he is stealing money from my pocket and from his mother's pocket, purse, and seeing cinema. Thakur remained silent for some time, then told him, you tell your son to come me. So that boy came one day, and Thakur told him, you like to see cinema? Now, yes, Thakur. All right, I will give you money. Don't steal money from your mother or from your father. And he used to come, but there was a condition. That boy will tell the story of that movie to Sri Sri Thakur. So after seeing one movie, he used to come to Sri Sri Thakur. Thakur told, you narrate the story. He did that. After a few days, you are seeing so much of movies, I don't have much time. You get in writing in a paper, notebook, and tell me. So he did it. All the listeners and devotees around Thakur, they appreciated the boy. He exactly reproduced what he has seen in a movie. And he has wrote in nice language the story of that movie. And after one day Sri Sri Thakur told that you write a movie. The script of a movie you write. He was puzzled, but later on the devotees, they persuade him, Thakur telling, you do it. He wrote that is your dialogue and a book on a preparation of a movie. And that was accepted at that time by a cinema company to produce it. Sri Sri Thakur told, unless you have got an ideal, unless you have got some trait within you, you cannot do research. By doing research, you will be fooling others, as we have done
in case of this polythene. So those people, they developed polythene, they could not understand. It has got immense utility, but it has got immense difficulties and which creating a problem our society. So that boy then became a script writer. So normally a script writer, as far I remember, the Devdas which was released 10 years back, the person who wrote the script, he got 1 crore rupees. At that time that movie spent 60 crores rupees to have that. Anyway, what I want to say that all of us, we have got some traits. We have some Christi. We have some ideas. So unless we have got ideal, we cannot come to that. As Valmiki, Dasyaratnakar could become the writer of the great epic for humankind, that is Ramayana, but he didn't do that. So we have got all the agriculturists, those are, we are here, animal scientists, other, we will think over that, and by reciting the holy name and doing Jajana Jajana Ishtabhruti, so slowly in your mind it will come. One morning, I will stop. One morning, one person telephoned me. One Guru Bhai telephoned me. Dada, I am seeing digitalis. In front of me, I am in meditation and it is written digitalis. I told, anybody has got a heart problem in your house? Now, yes. Dada, my wife is suffering from heart problem. Then I told him that you go to a homeopathic and tell him that treat your wife with digitalis. Another occasion, one Guru Bhai meditated during this corona. He thought his mind, there is no medicine in corona. Patat, it is Rudraksha. He told me that it came as Rudraksha. And in 1939, in America, somebody has conducted research during the smallpox, menace and many other viral disease in the acute conditions. A Rudraksha paste with sandalwood can check any respiratory problem which may lead to the death. So what I want to conclude here, plants are existing and many crops are growing, but unless one accepts the ideal, he cannot go in proper direction to conduct research. And Sri Sri Thakur has told, he will conduct research, mislead himself and mislead the society, which create lot of disaster. Thank you. So, lot of things are there to be told, because we are shortage of time, because our main objective is to invite some of the questions to give the answers. So I think within 1 or 2 minutes we can just highlight the opportunity and the possibilities. Professor Trinath Maharana, he has highlighted regarding shrinkage of land, role of plant breeders, genetics, how to develop some of the good varieties, environmental pollution, medicinal gardens, some medicinal plants, and also regarding the human resource development. I now request Dr. K.K. Bandyopadhyay, Kalinganga Bandyopadhyay, Principal Scientist, Water Management Center, ICR, just to highlight regarding the NRM, which includes soil science, agronomy, plant physiology, biochemistry, agriculture engineering. Lot of branches are there under the natural resource management. What is the opportunities and what are the possibilities and the future of these subjects, just to highlight within 1 or 2 sentences. Joy Guru to all. Thank you, sir. My teachers are here. Dr. Senapati, Dr. Maharana, they are my teachers. And my fellow panelists. Sir told me about the natural resource management. As you know, day by day, the natural resource is getting degraded. Soil is getting polluted. We are losing our valuable soil. For production of 1 inch of soil, so many years are
invested, we are not able to realize the value of soil. Okay, so we have to stop soil erosion. Then water is getting polluted. Water resources are depleting day by day. So we have to manage the natural resources properly. And regarding the career advice, what are the opportunities in agriculture? That people are thinking that agriculture, bhai, ये तो चाष बास है, इसमें और कुछ नहीं है. But it is agriculture is the aggregation of all culture. Those who have studied agriculture, they know we study all aspects of science that helps in growing a successful crop. People are thinking that that food is available from the supermarket, but for it involves a toils of the farmer, how much effort he or she is giving, that people are not able to realize. They are wasting their food. That is a crime against society, that is a crime against humanity. So now regarding the job opportunity, I will list out something, sir. So in agriculture, if you have a BSc AG, then you have opportunity in state government, like your agriculture officer in AO, then agriculture horticulture officer, then assistant soil conservation officer. Okay, then you have also chance in central government, just like in warehouse corporation, food corporation of India, then coconut development board, rubber, teas and coffee board. Similarly, just like myself, I got an ARS, that is called Agriculture Research Service. After BSc and MSc, there is all India, just like your IS, Indian Administrative Service, Agriculture Research Service is conducted on different subjects. Those, if you clear, throughout India there are so many agriculture research institutes are there. Just like in Bhubaneswar, we are having 3 institutes. One is our institute, Indian Institute of Water Management, then Central Institute for Women in Agriculture, then SIFA, Central Institute for Freshwater Aquaculture. Then in Cuttack, we are having CRRI, Central Rice Research Institute. Then so many agriculture center substations are also there in Bhubaneswar. So there is a huge scope. Then besides this, you can also, people are also, after BSc, they are trying for jobs in banking sector. Okay, and then in agriculture, like agriculture universities also you have scope. Then besides this, from agriculture degree, people are also trying for administrative service and Indian Forest Service. So there is a huge scope in agriculture. Even in private companies there is a huge scope. So you have to pursue your degree properly and develop proper skills. If you have proper skills, you will not find any agriculture graduate unemployed nowadays. So with this I would like to conclude and hand over it to Dr. Senapati sir. Thank you. After plant science and natural resource management, I request Hari Prasan Sahu. Now he is at BHU and he has joined online to highlight regarding the plant protection side, including pathology, nematology and also entomology side. So how the scopes are there and opportunities are there and career advancement there in those plant protection side. Dr. Hari Prasan Sahu. So, coming to the plant protection part, so plant protection is the basic things that protect the crops from various diseases or the insects, or we can say any biotic or abiotic stresses. So, when we talk about any plant protection strategy, it is all about the crop health management. In case of plant protection, there are the 4, as Suresh sir already said, there are 4 categories: the plant pathology,
The plant pathogens introduce the diseases, study of diseases that's caused by different fungi, bacteria, and viruses. In case of entomology, it deals about insects, and in case of nematodes, nematology it also differentiates the nematodes. And in other जैसे कि हम लोग और अगर किसी में देखना चाहें, जैसे और जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं जो कि पेस्ट और डिजीज को बढ़ा देते हैं, तो उस केस में भी हमको बहुत सारे स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग उस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में उसको बढ़ोतरी करें, जैसे कि आजकल के केमिकल कंट्रोल को हम लोग आजकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है कंट्रोल, वो मैनेजमेंट बहुत जल्दी होता है, लेकिन फार्मर्स इजीली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से क्या होता है, टॉक्सिसिटी डेवलप होता है, एनवायरमेंट टॉक्सिसिटी होता है, बहुत सारे ऐसे, ये तो कॉमन चीज है। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल से वो क्या होता है ना, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो हम लोग बोलते हैं, एक एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल वे में लेके जाना, तो सस्टेनेबल वे में लेके जाने के लिए तो हमको कुछ सेफ गार्डिंग करना पड़ेगा कि हाँ हमको एनवायरमेंट को बचाना है, तो उस हिसाब से प्लांट प्रोटेक्शन बहुत अहम हिस्सा रखता है। तो अभी अगर हम, जैसे कि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो अगर हम बहुत सारे स्कोप की बात करें या फिर कैरियर के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कालिंगा ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, द मेनली हम लोग का जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, पहले प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी था, कहीं अभी कुछ स्टेट्स में वो भी होता है, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे एग्रोकेमिकल्स कंपनीज होते हैं, सीड इंडस्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे कि वो सीड पैथोलॉजी, जैसे हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत से डिसीज होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा कैरियर ऑप्शन आते हैं। और फिर हम लोग का मेन जो प्लांट प्रोटेक्शन है ना, तो प्लांट प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग एक लैब के अंदर रिसर्च करते हैं, या फिर हम फील्ड सर्वे करते हैं, फील्ड में क्या सिम्टम्स आ रहा है, तो मेनली तो हम लोग का साइंटिस्ट, जैसे हम सर ने ऑलरेडी बोला कि ARS होता है, तो हम लोग जैसे ARS करते हैं, तो ARS पाने के बाद हम साइंटिस्ट होकर कहीं बहुत सारे लैब इंस्टीट्यूट जैसे IRA हो गया, इनर हो गया, AFL हो गया, MBIM हो गया, वहाँ पे साइंटिस्ट का पोस्ट निकलता है, हम लोग जूनियर साइंटिस्ट जैसे यंग प्रोफेशनल्स ये सब निकलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे कैरियर ऑप्शन है, जो कि हमारा रिसर्च मतलब जो हमारा एरिया है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल के जैसे AI बेस्ड बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसको भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए नॉलेजेबल, जैसे कि हमें नॉलेज ही नहीं होगा कि क्या देखना है, वो डिजीज को कैसे डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस स्किल अगर नहीं होगा तो उस स्किल के हिसाब से सब तो AI कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए हिसाब से वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं। और जैसे कि और कुछ बात किया जाए, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक कैरियर है, तो एक कंक्लूड ही करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन कंक्लूजन तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन या फिर एग्रीकल्चर में जो हम लोग करते हैं, ये कैरियर नहीं है, ये हमको नेचर को बचाना है, उसको सस्टेनेबल वे में आगे लेके जाना है, और इस मतलब जो इस संसार है जो भगवान ने, ठाकुर ने, या फिर जिसे हम लोग बोलते दाग में बनाया है, उसको हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Thank you. तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। Thank you. Now I invite Dr. Pramod Kumar Raut. He is an animal scientist, dairy science. There are a lot of scopes are there. He can highlight within a very short time. Hello, esteemed panelist and chairman, dear students. This is this is regarding the diverse career scope. So what you understand, agriculture is a big umbrella. You can travel from agriculture, horticulture, crop science to your soil science to even forestry and other animal science, fishery. And you can even go up to beekeeping to insect management also. These are the very big umbrella agriculture. So dear students, how many of you are aware of agriculture revolution? You might not be remembering your parents on the line for the, where India is a country starting from a begging bowl. Now it's just self-sufficient in agriculture. So we have green revolution, white revolution, red revolution, so many pulse revolution, fish revolution. So you can think of our tune is we have produced crop and other more than 10-fold, and in the egg production we have gone up to 200-fold production. Milk production 13-fold increased production from the independence to retail trade. So you can see what is the gamut of scope. But present day concern is not the productivity in Indian condition, it is now what is the food system transformation. So all those students, so you need a better skill now because we need very healthy food, we need better processing technology, better technology, and we need better environmental sustainability. So all these aspects now very promising.
So coming to focusing specifically, if we'll come to the veterinary animal science, so it is a huge scope now that our all previous speaker highlighted. It is a whole integrated management system, what is the vision of Sri Sri Thakur Anukul Chandra. If you go through this, if you come to specifically veterinary science, so now even in agriculture and science, so what is the requirement? So now as we are going to the becoming a Vikasit Bharat, so I can see very good ahead scope for you to go ahead, and you have a very good jump you can make in your career. So that is how we need a next generation professionals. So how to prepare yourself for the next generation professionals? So you have to think of, because you need skill, you need wisdom, your knowledge, as well as very unique point where specific field you want to go, prepare, and there are a lot of online courses. You can enhance your CV and apply for this specific area, everywhere. So this is a veterinary science. If you will go for the start from the simple clinical practice. So there is a lot of scope in veterinary, state government, central government, lot. So you have scope in wildlife as a veterinarian. You have scope in research service, agriculture research service and others. You have scope in pharmaceutical service, because nowadays a veterinary science is not a science only related to treating animals. It has 3 phases. Veterinarian is responsible for treating the animal, veterinarian is responsible for human health, now as a veterinarian is responsible for environmental health. You are now hearing the One Health concept. So 3-dimensional responsibility you have. And majorly, as far as focused, what is the that is insecticide, pesticide, all those residue in your food products. So coming through milk, crop and others. So that type of things analysis is now, there are a lot of careers, and I've been coming to pharmaceuticals. To if you'll go for this defense service, there is a remand veterinary crops, there is a veterinarians required by ITBP. So number of scope is there from defense to treatment, and again, as is now, although IoT based on different companies, startups, and other taking. So number of scope is there. You can discuss if you have problem, what is the diverse career pathway you can take for your future benefit, and how to strengthen your CV, how to go for the identify the niche area, you have the interest, you have the dream to fulfill, how you can serve the society, as well as enhance your own capacity. That is the essence of the thing, I think. Thank you, Argan. We have among us Dr. Piyaranjan Sahu. He is one aquaculture scientist. I request him to highlight the opportunities and the career advancement in aquaculture. Thank you, sir. समस्त को जय गुरु मु ओडिया रे एथि पई कहिया को चाहूची जे एटा होची फाइनल सेशन माने लास्ट सेशन तो आम माने समस्ते हालिया हो जाइए किंतु जस्ट फॉर ए वार्म अप पई मु गोटे एस्पायर टीम पई गोटे ताळीटे समस्त पाखुर आशा करी प्लीज तापरे मु जो कथा कहबी हुए तो ताली पर मते गाली आसी पारे कोन पई एठी हमर एग्री अलाइड सेक्टर सबू दिग्गज माने अछंती मु दिग्गज नु मु आज भी पाठ पढुची ठीक अछि तो सार माने सेपटू आरंभ करी हमर एग्रीकल्चर ठू आरंभ करी वेटनरी एनिमल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर सबू सार माने अछंती तो आमे एबे जो मु कथा कहूची जे आमे माने गाई ठू नात खाइबा पई पडिबो कादुओ को ओल्हेबा पई पडिबो आ मु फिशरी हिसाब रे माने पानी करे जाई माछ धरिबा पई पडिबो तो आपण मैंने भावुवे अरे ये फरेन पाठ पढ़ी आसी ये कौन ओडिया कहूँ पुणी एक कथा कौन कहला एटा गाली दे पारती मु खराब भाविनी किंतु कहबार उद्देश्य होची जे आमे माने जहाँ भी आमे पाठ पढ़ु एग्री अलाइड सेक्टर जेहेतु पैनल मेंबर माने अच्छी तो पैनल लीड करुँच तो कहबार माने होची आमे एक्सपीरियंस बेस हवाई आमको पड़ो एक्सपीरियंस जदि नथिबो आम मानकु कौनसी कंपनी भी जॉब दबो नहीं आपण मानक पाखरे मु रियल माने रियल फैक्ट कथा कहूची जदि आपण माने सेंट्रिक न हेबे सेंट्रिक इन द सेंस एबे आपनकर पाठपढ़ा माने पाठपढ़ा इज योर सेंट्रिक जस्ट लाइक दैट पाठपढ़ा 4 वर्ष रे पाठपढ़ा आपनकर डिग्री सरी जाउची तापरे जते बेले आपनकर अप्लाइड साइंस आसुची सेते बेले आपण हाथ जोडी के बसुचंती दैट्स द माने सबटु बड़ फॉल्ट आम मानकर सेटा कहीं आमे जेतिकी टीचर माने असिस्टेंट प्रोफेसर माने हमको जेतिकी पाठ पढ़ाउछंती आमे सेतिकी रे सीमित सीमित होइकी रहि जाउचे एबे आहुरी सुविधा हला हम पाखरे समस्त पाखरे फोन रहिला एआई को आमे यूज करि परिबा पॉजिटिव वे रे यूज करि परिबा
आउ एआई गोटे एबे निहाती आवश्यक आज न होईची काली माने राति पाहिला बेलू आमको निहाती आवश्यक एआई रो सबुथिरे एग्री अलाइड सबुथिरे आमर आवश्यक जदि आम एक्सपीरियंस बेस न होबा तो आमको कौन सी कंपनी जॉब दब नहीं आमे एपटे एक्सपीरियंस को गेन करबा प्लस आमर एकेडमिक पाठ पढुचे डिग्री पर बैचलर डिग्री पर मास्टर्स करबा मास्टर्स पर को मास्टर्सटा कले बेटर हबो मोर माने स्ट्रांग पॉइंटटा कोटा मु जेंट कोथरे अछि जदि मु डिजाइनिंग रे अछि एग्रीकल्चर रे फैक्टर रे डिजाइनिंग रे अछि तो मु डिजाइनिंग रे जिबी मु मो कथाटा कहूँ मु लेखा लेखी कले लिटरेचर पर्सन मु तो मु आईसी प्रिपरेशन करे तो मु एबे जो कंपनी रे भी मल्टीनेशनल कंपनी जो भी जॉब करूची मते से माने ऑलरेडी जानी छथि काइना मु स्ट्रांग इन आईसी मटेरियल प्रिपरेशन व्हाट एवर इन एनी वर्नाकुलर लैंग्वेज तो जमती आमर कहते लैंग्वेज बैरियर रहा कथा नुह तो लैंग्वेज बैरियर जमती पैनल सेसन भी रहा कथा नुह सेमती आम जो फील्ड को जाऊे माने लैब टू लैंड प्रोग्राम जिते सार कहीपर माने आमर एक्सपीरियंस सार अच्छा तो जदि आम लैब टू लैंड माने आम लैब रे जहाँ शिखुचे जदि आम लैंड रे विदाउट हेजिटेशन आम लैंड को जापर आ कम्युनिटी सहित इंटराक्शन कर फोकस पॉइंट हूँ कम्युनिटी सहित इंटराक्शन करवा आम ये टेबुल चेयर बेंच डेस्क रे बसी पड़ी काम करदे सेटा रिसर्चर ताको कहबानी केबे भी कहीं आम जिते फील्ड को नहलेचे से मुझे ता पूर्व कहली आम कादुओ सहित कादुओ होगापी पड़ो आउ वाटर आउ आमर फूड बिना आमर लाइफ ही ना जोटा कि आम शेष ठाकुर अनुकूल चंद्र कही तो ताकू आम फोकस करवा आमर जहाँ भी आमर गोल रोचे सेंट्रिक होगी आम कम करवा आउ अपॉर्चुनिटी जदि आम फोकस करवा 1 मिनिट रे सारीदेवी अपॉर्चुनिटी जदि एक्वाकल्चर आप देखिए टोटाली माने फिशरी साइंस रे तो आपंकर सेंट्रल गवर्नमेंट ठू आरंभ कर स्टेट गवर्नमेंट रे प्लस आमर विभिन्न प्रकार फाउंडेशन अदर मिनिस्ट्री रे भी जमी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मेराइन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी एमपेडा भी अच्छी विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन ने आपण माने स्पेशलिस्ट हिसाब से रही पारे यंग प्रोफेशनल हिसाब से रही पारे विभिन्न गुड़ाक सीएसआर प्रोजेक्ट आसूची प्रोजेक्ट गुड़ाक यंग प्रोफेशनल रही पारे थेमाटिक एक्सपर्ट रही पारे यहीपरी विभिन्न प्रकार आमर कौन अपॉर्चुनिटी आसूची तो एतिक मु कनक्लूड करने चाहिए समस्त को धन्यवाद पेसेंस देवाई धन्यवाद मोर आ गोटे जिन कहबार जे मु बहुत कैरियर ऑप्शन कहली ता भितर आउ गोटे कैरियर ऑप्शन होची आपण यू कैन डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप आप यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड नाउ डे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर लिविंग देयर जॉब एंड दे आर डूइंग फार्मिंग they are doing AI based farming, IoT enabled soil moisture sensors they are using, IoT enabled irrigation and fertilizer management they are doing, and so there is huge scope. Now the government has a scheme called ARIA, attracting and retaining youth in agriculture. So means how to develop interest among youth for agriculture, government is trying. So आपण माने ए दिगरे जो चेष्टा करिवे त निश्चय आपण माने लाभवान होई परिबे. थैंक यू. So now we are going to conclude this session. After this session, you are allowed to put questions just outside the hall because we are there. So I think actually the audience are very poor, but those who are present here, you know, the main objective of this seminar is to build human beings. So the main objective of satsang is to build human beings. Manisha tiyari karana. This is a factory where human beings have been built up. So we have concluded with this. If you have any queries, any questions, anything to put questions, so you can just, so lastly he has given one nice point. As you know, actually the mushroom revolution in Pipili block, actually it has been started. Now so many farmers have been come forward, and now this is highlighted, and throughout the India you will find. So the exports, the other materials are also being exported. So the human resource development, entrepreneurship development is most important. Anyway, I thank the organizers. With this, we have concluded this session, session 4. Thank you so much. Now I will request Rishikesh Senapati sir to felicitate our panelists.
Thank you. Now I will request Dr. Trinath Maharana sir to felicitate Rishikesh Senapati sir. Oh, okay. Online, later on you can just take. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Please have your seats. Now I would like to invite Mr. Surya Prakash Mahapatra to felicitate our mentors. Mr. Kaibalya Kumar Sahu, Mr. Goranga Behera, Mrs. Maheshwata Behera. Mr. Kaibalya Kumar Sahu. Next, Mr. Goranga Behera. Next, Mrs. Maheshwata Behera. Next, Mr. Pakruti Ranjan Sahu. Next, Dr. Anisha Samanta. Doctor. Next, Dr. Sushri Supanna Mahapatra. Next, Mr. Rishikeshan Pradhan. As we approach to the end of this enriching day, we now move to the valedictory session. I invite our organizing secretary, Dr. Sanat Kumar Sahu, to deliver the vote of thanks. Sir, please. Respected Program Chair, distinguished dignitaries, honored guests, esteemed speakers, respected faculty members, media representatives, sponsors, dear students, and all present here, a very good evening to everyone. It is my great honor and privilege as the organizing secretary to propose the vote of thanks on the successful completion of the Aspire Career Counseling Seminar, a meaningful initiative jointly undertaken by SATSANG VIHAR Bhubaneswar, Shoya University and OUTR University.
to guide and empower our students towards informed and purposeful career paths. At the outset, I express my deepest gratitude to our distinguished keynote speakers. I sincerely thank Mr. Surya Prakash Mahapatra, Global Head of AI Scaling Wipro Limited, for his insightful session on transforming career confusion into clarity. I extend my heartfelt thanks to Dr. Sutanu Chakravarti, Professor IIT Madras, for his thought-provoking talk on discovering purpose and the importance of why in our journey. My sincere appreciation to Mr. Kalinga Kesari Ratha, MD EVOS Buildcon Private Limited, for motivating our students towards entrepreneurship and innovation. I would like to thank Dr. Jubilee Purekasta, Scientist AF and Joint Director, Invest DRDO, for sharing valuable insights on meaningful and conscious career choices. I would like to sincerely acknowledge the moderators and panelists in the plenary sessions. Our thanks to Lieutenant R.K. Thakur, Mr. Narsingha Jethi, Mr. Pradyumna Mahapatra, Mr. Purushottam Mishra, Engineer Pratyush Kumar Pradhan, and Dr. Jubilee Purekesta for their valuable contribution to the civil and defense service session. I extend my appreciation to Dr. Lingaraj Sahu, Dr. Sutanu Chakravarti, Dr. Anisha Samant, Dr. Bhattakrishnan Tripathi, and Dr. Abhi Ghosh for their insights in the higher education and research session. My thanks to Engineer Prasant Kumar Panda, Dr. Partha Tripathi, Mr. Titas Nandi, Mr. Kalinga Kesari Ratha, Mr. Surya Prakash Mahapatra, Mrs. Maheshwata Behera, Mr. Prakriti Ranjan Sahu, Mr. Gaurang Behera, Mr. Kaivalya Kumar Sahu, Mr. Siddharth Das, and Mr. Vishwajit Gaur for sharing their expertise in engineering industry, business, startup, corporate and management careers. I would also like to acknowledge Dr. Hrishikesh Senapati, Dr. Trinath Maharana, Dr. Pramod Kumar Raut, Dr. Kalikinkar Bandopadhyay, Dr. Priyaranjan Sahu, and Mr. Hariprasan Sahu for their valuable inputs in the agricultural and technology session. I extend my sincere thanks to all the counselors who actively engaged in the one-to-one career guidance sessions, making this program highly beneficial for students. I would like to express my heartfelt gratitude to our program chair, Dr. Banavihari Mishra, and working president, Dr. Ranjan Malik, for their constant guidance and support. My sincere thanks to our joint conveners, Dr. Vihu Prasad Panda and Dr. Bhattakrishna Tripathi, and all the organizing committee members, including Dr. Kodam Singh, Dr. Narayan Nahak, Mrs. Rosaline Dalai, and Dr. Bhikari Charan Bhatta for their continuous efforts and dedication. I would also like to acknowledge our esteemed advisory members, Dr. Abhay Kumar Parida, Mr. Umakant Sahu, Dr. Sudhanshu Shekhar Sahu, and Dr. Pradit Kumar Biswal for their valuable guidance. A special note of thanks to the talented performers Vedasri Aparna Sahu, Deepali Pradhan, Devika Pradhan, Abhilash Depta, Gaurav Kumar Sahu, Sudhanshu Pani, and Dipta Sundar Mahanti for the beautiful musical presentation, Rhythm and Resonance. I would like to extend our sincere gratitude to all media persons and press representatives for their valuable coverage and support in the amplifying the impact of this event. Our heartfelt thanks also go to our sponsors and supporters for their generous contributions and trust. I would like to place special appreciation on record for our student volunteers, whose dedication, discipline, and tireless efforts behind the scenes ensured the smooth execution of every segment of this program. Your contribution has been invaluable to the success of this event. I would also like to thank
all faculty members and staff for their constant support and coordination. Most importantly, I express my sincere appreciation to all the students and participants whose keen interest and active participation made this event truly successful. Before I conclude, I extend my gratitude to everyone who contributed directly or indirectly to this event but could not be mentioned individually. Let us continue to guide, inspire, and empower our youth towards a brighter and purposeful future. With this, I conclude my vote of thanks. Thank you all. Thank you so much, sir. Now, on behalf of our organizing team, I thank you all for keeping patience and making this program a successful one. I thank all our respected speakers, mentors, and participants for making this event truly meaningful. Remember, your career is not just about what you pursue, it's about how passionately you pursue it. Thank you, everyone. Have a wonderful day ahead. Now, we will have a photo session. All the students are requested to come forward here for the photo session. Volunteers, ସମସ୍ତେ କି ନେଇ ଆସ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନବା।